Shri Gurubhyo Namaha. Namaste. Atharva Forum, a Shiva Sankalpa initiative, aims to be a repository of online resources of knowledge, both of traditional and the ever-changing world we live in. The forum is a platform that brings the best of scholars to every sincere seeker. It is as spiritual as it is social and cultural. We offer illuminating content and discussions. In the past 2 years, we have covered our history, itihasa, arts, culture, and science with overall 125 videos on our channel. And we have conducted 3 courses in the past, absolutely free for students. We have the Atharva playlist with lectures and conversations on science. We take that forward with our first post-COVID offline in-person event. For those wishing it were held on a weekend, we got a lot of complaints. We did try and eventually we settled for today. Our topic today, Indian thought streams and our future STEM research. Briefly about our illustrious panel. As I introduce each one, I would request Rajkumar Bhatia ji to please come on stage and felicitate our chief guest, Adarniya Dr. Joshi ji. Dr. Joshi is known to all of us as the most eminent and scholarly member of Parliament in the service of the nation. Dr. Joshi's tenure as the education, the then called HRD ministry, stands out for its bold reforms and decision-making. We all stand to benefit from his knowledge and experience today and forever. He was formerly a professor of physics at the University of Allahabad. Our next speaker, Professor Gautam Desiraju ji, I would request Dr. J.K. Bajaj ji to please come and felicitate Professor Desiraju ji. He is an internationally acclaimed and award-winning scientist, presently the chairman of the Governing Council of the Bose Institute, Kolkata. His contributions to the field of crystallography are legendary. He is the former president of the International Union of Crystallography. Dr. Jagdish Singh ji, to please come on stage to felicitate Shri Jayant Sahasrabudhe ji, who is the National Organizing Secretary at Vigyana Bharati. Under his leadership, Tech for Seva initiative has been running successfully. Tech for Seva provides a platform to academicians and scientists working on grassroots innovations. Welcome, Jayant Sahasrabudhe ji. Our last speaker, Shri Bhavesh Kansara, has come all the way from Chennai. Welcome, Bhavesh ji. I would request Shri Sahil Agarwal ji to please come on stage. He is the co-founder of Rishihood University. Shri Bhavesh Kansara, besides trolling random people on Twitter, he's very popular for that. He has a very massive following for that. He is a master's in mechanical engineering from Stony Brook University, US. Bhavesh is the managing director for a scientific and engineering simulation company. He's the author of Twisted Threads, runs a podcast and a blog called Kansaratva. India's education system was prosperous. It was interdisciplinary, research-based, and involved active participation of students, equipping them with analytical skills and help undertake innovative approaches at the workplace. As we discuss STEM, our panel will also be taking us through our illustrious past and the applicability today. STEM stands for Science, Technology, Engineering, and Maths. STEM, a growing movement in education worldwide. It is integrated, interdisciplinary, and student-centered approach of learning that encourages critical thinking, creativity, collaboration, and design thinking across multiple platforms. STEM education typically uses a newer model blended with learning that contributes traditional classroom teaching with online learning methods and hands-on activity. This model aims to allow students to experience different ways of learning and problem solving. An important role of STEM education is to help students develop skills that would empower them later on at the workplace. It's important that our nation's youth are prepared to bring knowledge and skills to solve problems, make sense of information,
and what to do with the information that is at hand, and evaluate evidence to make decisions and innovate. Our panel today will explore this and also what is not included in STEM, arts, social science, and how this important aspect could impact future learning. The benefits, criticism, and the NEP in this light will also be taken up. Where will these STEM students end up? We produce a lot of talent, but the best talent ends up abroad. Are we preparing them for the West or for the Indian industry? That preparedness to hire them within India. I now invite our first speaker, Shri Jayant Sahasrabudhe ji, to deliver his address. Jayant ji. वर्तमान में हम स्वतंत्रता का अमृत महोत्सवी वर्ष मना रहे हैं। इस समय अपने देश के स्वतंत्रता संग्राम का स्मरण अपने देश में सर्वदूर करने का प्रयास हो रहा है। उसकी ओर फिर एक बार देखने का प्रयास भी हम सब मिलकर कर रहे हैं। एक बात जो विज्ञान भारती के कार्यकर्ताओं को ध्यान में आई, उसको मैं आपके सामने रखने का प्रयास करूंगा। अपने देश पर आक्रामक लगातार कई शतकों से आक्रमण करते रहे। उन सभी का उद्देश्य था कि भारत की जो पहचान है, जिसको हम स्व कहते हैं, उसको मिटाना, उसको तोड़ना, उसको उद्ध्वस्त करना। आक्रामक बदलते गए, आक्रामकों के तरीके और साधन भी बदलते गए। उसमें एक विशेष जो अंतर दिखता है, वो अंतिम आक्रमण करने वाले ब्रिटिश और उनके पूर्व के आक्रामक। पूर्व के आक्रामकों के पास जो साधन तरीके थे, वो परंपरागत थे। अपने देश के विद्यालयों को, विश्वविद्यालयों को तोड़ा। जैसे कई उदाहरण देखते हैं। वर्तमान में श्री राम मंदिर के बारे में बात तो चल ही रही है। नालंदा के बारे में भी हम देखते हैं कि नालंदा को भी तोड़ा गया। वहाँ का ग्रंथालय भी इतिहास ऐसे बताता है कि लगभग 6 महीने तक जलता रहा। सामान्यतः यही तरीके आक्रामकों के रहे। भारत की पहचान को मिटाना, ये उनका एकमात्र उद्देश्य था। ब्रिटिशों का उद्देश्य भी वही था, लेकिन ब्रिटिशों के साधन और उनके तरीके ये विशेष अलग थे। उसमें मुख्य था विज्ञान। विज्ञान ब्रिटिशों का अपने देश पर आक्रमण करने के लिए एक साधन था, और उसको कई पद्धति से लोगों ने देखने का प्रयास किया है। डॉक्टर राजेश कोचर नाम के एक बहुत बड़े विद्वान थे, अभी अपने में नहीं रहे। उन्होंने एक इस पर शोध पत्र लिखा जिसका शीर्षक है साइंस यूटिलाइज्ड एज अ टूल टू कंसोलिडेट कॉलोनियल रूल इन इंडिया। तो हम देख सकते हैं कि ऐसी कई बातें हमारे ध्यान में आएगी। और एक बात मेरे पढ़ने में आई कि डॉक्टर एस चंद्रशेखर, जो अपने देश के जाने माने खगोल भौतिकी के विद्वान थे, एस्ट्रोफिजिसिस्ट, वो भारत स्वतंत्र होने के बाद अमेरिका चले गए। वहाँ पर जो अनुसंधान किया उसके कारण उनको नोबेल पुरस्कार भी मिला 1983 में। उनकी जीवनी लिखने का कार्य किसी ने हाथ में लिया, और लिखते समय उस जीवनी लिखने वाले लेखक ने उनको एक प्रश्न पूछा। वो प्रश्न इस प्रकार का था, डॉक्टर चंद्रशेखर, वाई डू यू फील that golden age of Indian science appeared in first 3 decades of 20th century, that is from 1900 till 1930। इसके लिए उनका जो उत्तर था, the response from Dr. Chandrasekhar was like this: there was a need for national expression to showcase British that Indians are equal even in the domain of science। इस प्रकार की एक कल्पना जो उनके मन में थी वो उन्होंने बताई। यानी पहले जो हिस्से में दिखता है कि उन्होंने कहा कि देयर वाज अ नीड फॉर नेशनल एक्सप्रेशन टू शोकेस ब्रिटिश, ब्रिटिशों को दिखाना था।
यानी राष्ट्रीय भाव का प्रकटीकरण करने की आवश्यकता थी, वो समय था, ब्रिटिशों को दिखाना था। और आगे वो कहते हैं टू शोकेस ब्रिटिश दैट इंडियंस आर इक्वल इवन इन द डोमेन ऑफ साइंस। अभी इसका अर्थ क्या है, क्यों भारत के लोग दिखाना चाहते थे? तो हम जानते हैं कि इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस का निर्माण कैसे हुआ। आज भी उसकी वेबसाइट पर जाकर देखेंगे तो आपको दो बातें वहाँ पर मिलेगी, विशेष बातें, जो डॉक्टर महेंद्र लाल सरकार के मन में थी। उसमें ऐसे लिखा है कि ही वांटेड दिस इंस्टीट्यूशन टू बी सोलली नेटिव एंड प्योरली नेशनल। आज भी आप वो देखेंगे वेबसाइट पर तो आपको ये देखने मिलेगा, यानी उनको ये शुद्ध रूप से भारतीयों के लिए संस्था होनी चाहिए, ये मन में था। और दूसरी बात ये थी कि ये शुद्ध रूप से राष्ट्रीय संस्था होनी चाहिए। क्या? विज्ञान संस्था जो राष्ट्रीय स्वरूप रहेगा जिसका, इस प्रकार की होनी चाहिए। और हम सब जानते हैं कि यही एक संस्था है अपने देश की जहाँ से अपने देश के आधुनिक विज्ञान की कई पीढ़ियों के वैज्ञानिक निकले। 1876 में इसका निर्माण हुआ। तो हम जानते हैं कि 1858 में 30 नवंबर को जगदीश चंद्र बसु का जन्म हुआ। तो इसका मतलब है इस समय वो केवल 18 साल के थे। 2 अगस्त 1861 प्रफुल्ल चंद्र राय का जन्म हुआ और वो उस समय 15 साल के थे। आशुतोष मुखर्जी का जन्म 29 जून 1863 को हुआ। आशुतोष मुखर्जी एक बहुत बड़े गणिती थे, गणितज्ञ थे। तो वो भी यहाँ पर पढ़ने के लिए आए। उनके साथ स्वामी विवेकानंद भी थे, जिन्होंने यहीं से विज्ञान की शिक्षा दीक्षा ली। और यहाँ से इस प्रकार के लोग तैयार हुए और अपने देश को जो एकमात्र नोबेल पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में प्राप्त हुआ, वो भी इसी संस्था में काम करने वाले चंद्रशेखर वेंकट रमन जी को मिला, जिनको आशुतोष मुखर्जी वहाँ काम करने के लिए लेकर आए। और आपको शायद ये पता ही होगा कि डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन वॉज अ फर्स्ट नॉन वाइट पर्सन टू रिसीव नोबेल प्राइज इन द डोमेन ऑफ मॉडर्न साइंस। उसके पहले यूरोप के बाहर किसी भी व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया था। तो ये बात भी भारत से आई कि भारत ही एक ऐसा देश था कि जहाँ पर ब्रिटिशों को एक चुनौती दी गई विज्ञान के क्षेत्र में। चुनौती दी गई, इसका अर्थ क्या है? जगदीश चंद्र बसु की जीवनी 1920 में प्रकाशित हुई पहली, सर पैट्रिक गिडेस ने उसको लिखा है। वो जब पढ़ते 1920 में जगदीश चंद्र बसु जीवंत थे, 1937 में उनका देहांत हुआ। यानी ये भी एक बड़ी सम्मान की बात है कि किसी व्यक्ति के जीते जी उसकी जीवनी लिखी जाए। तो उसमें उन्होंने एक घटना का वर्णन किया है। वो घटना ऐसी है कि जगदीश चंद्र बसु बीएससी फिजिक्स होकर इंग्लैंड से 1884 में वापस लौटे, 1884। और उनकी इच्छा थी कि यहाँ पर मैं विज्ञान का शिक्षक बनूंगा, क्योंकि अपने देश में विज्ञान की शिक्षा ये बहुत ही मन से अंग्रेजों ने शुरू नहीं की थी। एक प्रेसिडेंसी कॉलेज था, वहाँ पर ये उन्होंने आवेदन किया कि मैं यहाँ फिजिक्स पढ़ाना चाहता हूँ। लेकिन उस समय अपने देश में ब्रिटिशों ने शिक्षा 2 हिस्सों में बांटी थी। एक को कहते थे इंपीरियल एजुकेशन सर्विस और दूसरे को कहते थे प्रोविंशियल एजुकेशन सर्विस। और उसमें भेदभाव कैसे था? तो इंपीरियल एजुकेशन सर्विस में केवल गोरी चमड़ी का ब्रिटिश व्यक्ति ही शिक्षक बन सकता था और प्रोविंशियल में भारत का काला व्यक्ति बन सकता था। दोनों की क्षमताएं, दोनों का ज्ञान, दोनों की कुशलता पढ़ाने की एक जैसी होने के बावजूद भी भेदभाव ये था कि ब्रिटिश व्यक्ति को अगर 1000 रुपये वेतन दिया जाता था तो भारत के व्यक्ति को उसी समकक्ष मात्र 300 रुपया था, यानी 2/3 कम। ये भेदभाव था। और जगदीश चंद्र बसु जब यहाँ आए तो बहुत ही प्रतिभाशाली थे। तो उनके जो गुरु थे लॉर्ड रैले, जिनको 1904 में नोबेल पुरस्कार मिला, तो उन्होंने अपने इस शिष्य के बारे में एक पत्र लिखा। उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड रिपन। उनको पत्र लिखा कि मेरा ये छात्र है, बुद्धिमान है और वहाँ पर विज्ञान पढ़ाना चाहता है।
तो आप उसको उचित स्थान मिले इसकी चिंता करें। वास्तविक लॉर्ड रैले ने उनको आग्रह किया था कि आप इंग्लैंड में ही रहे, भारत में जाकर क्या होगा। भारत में एक प्रयोगशाला भी नहीं है कि जहाँ जाकर आप बीएससी फिजिक्स हुआ व्यक्ति भारत में जाकर कुछ अनुसंधान कर पाएगा। तो ऐसी स्थिति में जगदीश चंद्र बसु एक संकल्प लेकर वापस आए थे कि मैं भारत में ही विज्ञान पढ़ाऊंगा। यहाँ पर आए और उन्होंने वहाँ पर आवेदन दिया। तो आवेदन का जो उत्तर मिला वो हमें समझना है, क्योंकि सर पैट्रिक गिडेस ने उसको इस पूरी घटना को अच्छी तरह से दिया है। जगदीश चंद्र बसु का आवेदन था, उसको उत्तर क्या मिला? उत्तर ये था, एज इंडियंस हैव नो एप्टीट्यूड फॉर एग्जैक्ट मेथड्स ऑफ साइंस, नो इंडियन कैन टीच साइंस। यानी केवल जगदीश चंद्र बसु का अगर ये उत्तर मिलता था कि जगदीश चंद्र बसु as an individual you do not possess this aptitude for exact methods of science, so we cannot accept you as a teacher of science. लेकिन उत्तर क्या था कि as Indians have no aptitude for exact methods of science, no Indian can teach science. जगदीश चंद्र बसु ने वास्तविक ऊपर से दबाव था। आजकल हम स्वतंत्र भारत में भी ऊपर से दबाव क्या होता है अच्छी तरह से जानते हैं। लॉर्ड रिपन से भी दबाव था, क्योंकि उनके पास लॉर्ड रैले का पत्र आया था। तो आखिरकार उनको मानना पड़ा कि इनको लेंगे हम, लेकिन ये काला व्यक्ति है इसलिए प्रोविंशियल एजुकेशन सर्विस में, और विज्ञान तो भारत का व्यक्ति पढ़ा ही नहीं सकता, इसलिए उन्होंने उनको टेम्पररी साइंस टीचर इस नाते वहाँ पर लिया और उनको कहा कि आपका वेतन 300 रुपया भी नहीं, मात्र 100 रुपया रहेगा। यानी जगदीश चंद्र बसु कहाँ पढ़कर आए थे? इंग्लैंड में पढ़कर आए थे। उनके साथ पढ़ने वाले लोग कौन थे? ब्रिटिश थे। उनमें भी उनकी गुणवत्ता श्रेष्ठ थी। ऐसा व्यक्ति जब भारत आया तब ब्रिटिशों ने इस प्रकार का एक अन्यायपूर्ण, भेदभावपूर्ण व्यवहार इस व्यक्ति के साथ किया। जगदीश चंद्र बसु ने इसके विरोध में संघर्ष करना तय किया, और उसके बारे में पैट्रिक गिडेस ऐसा लिखते हैं कि जगदीश चंद्र बसु इनिशिएटेड अ न्यू फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट अगेंस्ट दिस sheer injustice and racial discrimination। दोनों बातें थी, अन्याय था और वंशभेद, वर्णभेद भी था इसमें, क्योंकि ये काली कातड़ी का व्यक्ति है। तो ऐसे व्यक्ति को हम यहाँ विज्ञान नहीं पढ़ाने देंगे। और उन्होंने सोचा कि मैं ये 100 रुपया मात्र वेतन ये मुझे देने वाले हैं, उसको मैं स्वीकार नहीं करूँगा। और ये क्रम 1 महीने के लिए नहीं चला, 2 महीने के लिए नहीं चला, 3 महीने के लिए नहीं चला, सतत 3 वर्ष जगदीश चंद्र बसु बिना वेतन भौतिक विज्ञान पढ़ा रहे थे। और अंत में ये हुआ कि अंग्रेजों ने जगदीश चंद्र बसु का विज्ञान पढ़ाने का लोहा मान लिया और अंग्रेजों ने उनको भौतिक विज्ञान के शिक्षक इस नाते उनको स्वीकार किया। इतना ही नहीं तो 3 साल का वेतन पूर्वलक्षी प्रभाव से भी उनको दे दिया, और उसके बाद अपने देश में ये जो विभाजनकारी व्यवस्था थी शिक्षा क्षेत्र में, उसको भी बंद किया गया। मैंने जब इस घटना को पढ़ा और विचार करना शुरू किया तो मुझे लगा कि क्या ये पहला सत्याग्रह नहीं था अपने देश में? सत्याग्रह क्या है? तो मैंने कुछ उसकी परिभाषा ढूंढने का प्रयास किया। तब एक परिभाषा मुझे ब्रिटानिका एनसाइक्लोपीडिया में मिली। उसमें ऐसे लिखा है, व्हाट इज सत्याग्रह? सत्याग्रह इज ए डिटरमाइंड नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस और प्रोटेस्ट अगेंस्ट इनजस्टिस। तो मुझे लगा यही तो पहला सत्याग्रह है, और वो छोटे समय के लिए नहीं था, 3 साल था, और ब्रिटिश शासन शरण आ गया इस विरोध के सामने। तो इस प्रकार की कई बातें हम अपने देश के स्वतंत्रता आंदोलन के समय देखते हैं, जब ब्रिटिशों ने विज्ञान का उपयोग करके भारत को लूटने का, भारत की विशेषताओं को मिटाने का प्रयास किया। और भी कई बातें आप जानते हैं कि 1757 में जब प्लासी की लड़ाई जीत ली, 1760 में औद्योगिक क्रांति हुई, और 1767 में उन्होंने अपने देश में सर्वे ऑफ इंडिया नाम की
एक संस्था शुरू की, भारतीय सर्वेक्षण विभाग ऐसा उसको कहते हैं। और डीएसटी की वेबसाइट पर आप जाकर देखेंगे तो ऐसा उसमें लिखा है, द ओल्डेस्ट साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज सर्वे ऑफ इंडिया दैट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय ईस्ट इंडिया कंपनी इन द ईयर 1767। और पहले 100 साल अगर हम देखेंगे 1857 तक प्रथम स्वतंत्रता युद्ध हुआ और उसके कारण ब्रिटिशों को बहुत बड़ा धक्का लगा और उसके बाद उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन यहाँ का बंद किया और प्रत्यक्ष विक्टोरिया रानी ने अपने हाथ में भारत की सत्ता ली। तब तक अपने देश में सारे सर्वे स्थापित किए गए, जियोलॉजिकल सर्वे, बोटैनिकल सर्वे, जूलॉजिकल सर्वे, आर्कियोलॉजिकल सर्वे, ट्रिग्नोमेट्रिक सर्वे, एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे, ऐसे जितने आप देखेंगे। और इन सभी का काम एक ही था कि भारत के संसाधनों को समझना, उसको लूटने के लिए अधिकाधिक अध्ययन करना और उसको ले जाना। और उसी के लिए अपने देश में रेलवेज भी आई, पोस्ट एंड टेलीग्राफ आया, ये सारी बातें उसी के लिए आई। आप एक एक, जैसे हम उत्तराखंड में जाते हैं कुमाऊं में, जहाँ से मुरली मनोहर जी आते हैं, तो वहाँ का जो अंतिम स्थान है कि उसका नाम ही काठ गोदाम ऐसे है। ऐसी कई बातें हमें मिलती है। तो रेलवे का उपयोग मूल रूप से इसी के लिए था। तो ऐसी कई बातें ध्यान में आती है। और आज हम देखते हैं कि अभी ये सर्वदूर बात बताई जा रही है कि अभी तो हम अपना देश आर्थिक प्रगति कर रहा है और कह रहे हैं कि अपनी अर्थतंत्र की स्थिति कैसी हो तो $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो, ऐसा अभी कह रहे हैं हम, अभी बनना है। लेकिन जो अध्ययन हुआ है वो ऐसे बताता है कि अपने देश को अंग्रेज़ों ने जो लूटा उसकी कीमत $45 ट्रिलियन है, यानी $5 ट्रिलियन से 9 गुना ज़्यादा। तो ये सारी बातें विज्ञान के कारण हो पाई। उसके पूर्व के आक्रमकों के पास इस प्रकार की क्षमता नहीं थी। तो इसको हमें अच्छी तरह से ध्यान में रखना है। और अपने देश के वैज्ञानिक, जो जगदीश चंद्र बसु का उदाहरण मैंने दिया, उनके बाद आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय आए, उनके बारे में तो बहुत सारी बातें जानते हैं। 1901 में बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल वर्क्स उन्होंने शुरू किया। 1902 में हिस्ट्री ऑफ हिंदू केमिस्ट्री का पहला खंड उन्होंने प्रकाशित किया। 1907 में हम जानते हैं कि टाटा स्टील का प्रारंभ जमशेदपुर में हुआ और उसके लिए सल्फ्यूरिक एसिड की आवश्यकता रहती थी। तो प्रफुल्ल चंद्र राय टाटा के पास गए, उस समय दोराबजी टाटा थे। 1904 में जमशेद जी का देहांत हुआ था। तो वहाँ पर जाकर उन्होंने कहा कि सल्फ्यूरिक एसिड अब आयात मत कीजिए, सल्फ्यूरिक एसिड बनाकर देने का काम, दायित्व अब मेरा है, क्योंकि अपना देश स्वयं पूर्ण होना चाहिए, स्वावलंबी होना चाहिए। तो इन प्रकार की सारी कल्पना और अपने देश के क्रांतिकारकों को प्रफुल्ल चंद्र राय ने विस्फोटक कैसे बनाना सिखाया। तो कोलकाता पुलिस ने प्रफुल्ल चंद्र राय के बारे में जो टिप्पणी की है वो भी ध्यान में रखनी चाहिए। कोलकाता पुलिस ऐसे लिखती है, ही इज़ अ रिवोल्यूशनरी इन द गार्ब ऑफ अ साइंटिस्ट, ऐसे उनके बारे में लिखा गया है। तो ऐसी सारी ये बातें, फिर आगे कई बातें आती है। चंद्रशेखर वेंकट रमन जी के बारे में सुनते हैं कि वो जब वहाँ पर गए थे नोबेल पुरस्कार लेने तो बहुत दुखी थे, अश्रु उनके आंखों से आए। तो उनको पूछा गया कि क्यों आप रो रहे, तो उन्होंने कहा कि मैं ही इस सारे पुरस्कार विजेताओं में एक ऐसा अभागी व्यक्ति हूँ कि जो मेरे स्वयं के देश के ध्वज के नीचे खड़ा होकर नोबेल पुरस्कार लेने का भाग्य मुझे नहीं मिल रहा है। मैं विदेश, जिन्होंने मुझे गुलाम किया है, उनके ध्वज के नीचे खड़ा होकर मैं ये ले रहा हूँ। और उन्होंने अपना नोबेल पुरस्कार अपने देश के स्वतंत्रता योद्धाओं को समर्पित किया। अपने देश में कई सारे इंस्टीट्यूशंस भी बने, जैसे IISc का मैंने उल्लेख किया। और महेंद्र लाल सरकार की ये कल्पना थी कि दिस इंस्टीट्यूशन शुड रिमेन आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ कॉलोनियल रूल। ये उनकी स्पष्ट कल्पना थी कि ब्रिटिशों के द्वारा हम कुछ सहयोग नहीं लेंगे। ब्रिटिशों ने अपने देश में कुछ शुरू भी नहीं किया विज्ञान सिखाने के लिए या अनुसंधान करने के लिए। फिर IISc के निर्माण के बारे में भी आप में से बहुत लोग जानते हैं कि स्वामी जी और जमशेद जी का किस प्रकार का मिलना हुआ और उसके आगे कैसी बातें आगे बढ़ी। और स्वामी जी 1902 में अपना देह छोड़कर चले गए, 1904 में जमशेद जी चले गए, 1908-9 में IISc का निर्माण हुआ। लेकिन उसके लिए भगिनी निवेदिता, दोराबजी टाटा, इन्होंने मिलकर किस प्रकार के प्रयास किए,
ये भी सर्वश्रुत है। तो अपने देश में इन्होंने केवल ब्रिटिशों के विरोध में उनका साधन लेकर संघर्ष किया, यानी एक तो ब्रिटिशों के बराबरी का एक उत्कृष्ट ऐसा विज्ञान निर्मिति का विचार इनके मन में चल रहा था और उन्होंने करके भी दिखाया। प्रफुल्ल चंद्र राय, जगदीश चंद्र बसु या 1930 में नोबेल पुरस्कार मिला। इसलिए मैंने जो पहले बताया कि जो प्रश्न पूछा गया था डॉक्टर एस चंद्रशेखर को कि वाई दिस गोल्डन एज ऑफ इंडियन साइंस अपीयर्ड इन फर्स्ट 3 डिकेड्स ऑफ 20th सेंचुरी। वास्तविक थोड़ा और पीछे जा सकते हैं। 1895 में जगदीश चंद्र बसु ने बेतार संदेश वहन का पहला प्रयोग कोलकाता में प्रदर्शित सबके सामने किया था। 1897 में वो इंग्लैंड चले गए थे, रॉयल सोसाइटी में उन्होंने उसको प्रस्तुत किया। तो इस प्रकार की ये सारी बातें अपने देश में चल रही थी और अपने देश में ये सारी जितनी बातें हुई उसका एकमात्र उद्देश्य था कि अंग्रेज़ों का ही शस्त्र अपने हाथ में लेकर उनको चुनौती देना, उनके साथ संघर्ष करना। और आज हम अगर देखेंगे कि स्वतंत्रता के पश्चात जो सारे विज्ञान के क्षेत्र में जो प्रगति हमने की है उसका मूल आधार भी यही सारे संस्थान बने हैं। आईएससी का नाम तो सर्वश्रुत है, आईएससीएस भी हम जानते हैं, बोस इंस्टीट्यूट भी 1917 में शुरू हुई और आगे चलकर ऐसी कई बातें 1916 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय का निर्माण हुआ। और वहाँ पर भी आप सभी सारे जानते होंगे कि 1916 में एक इंडस्ट्रियल कमीशन बना था, ब्रिटिशों ने बनाया, क्योंकि पहले प्रथम विश्व युद्ध के कारण इंग्लैंड से भारत में सारा माल आना ये संभव नहीं था, तो भारत में ही कुछ उद्योग खड़े होने चाहिए। और उस इंडस्ट्रियल कमीशन में एक सदस्य, 4 भारतीय थे, उसमें एक सदस्य थे महामना मालवीय। ये हमें आश्चर्य लगेगा, बाकी 3 सदस्यों को देखेंगे तो वो इस इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए ऐसे थे। उसमें एक दोराबजी टाटा भी थे, लेकिन दोराबजी टाटा वगैरह किसी ने कुछ बात नहीं की। अंग्रेज़ों ने जो बातें बताई उसमें कि भारत में कभी उद्योग खड़ा होना संभव ही नहीं है, क्योंकि भारत का जलवायु इस प्रकार का है कि यहाँ पर लोग परिश्रम कर ही नहीं सकते। एंथ्रोपोलॉजी के आधार पर, एंथ्रोपोमेट्री इस प्रकार का एक विषय रहता है, उसके आधार पर उन्होंने बताया कि भारत के लोगों की शरीर की रचना ऐसी है कि भारत के लोगों को कभी उद्योग वगैरह संभव नहीं होगा, तो भारत के लोग ऐसे ही रहेंगे। ऐसी कई प्रकार की बातें उस इंडस्ट्रियल रिपोर्ट में आई है। आप मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के वेबसाइट पर उस रिपोर्ट को पूरा देख सकते हैं। लेकिन उसके अंत में एक विशेष बात है, महामना मालवीय जी ने ये जो पूरे उनके सारे तर्क थे उसका खंडन किया है और वो बहुत उत्कृष्ट पद्धति से किया है। प्राचीन भारत में विज्ञान प्रौद्योगिकी का विकास कैसे था, भारत में किस प्रकार के उद्योग विकसित थे और जिन उद्योगों के आधार पर भारत एक सोने की चिड़िया बना था, और ये भारत का सारा, और उन्होंने अंग्रेज़ों को ही उसका आधार बनाया। अंग्रेज़ों ने जो अध्ययन किया उसी की साक्ष्य देकर मदन मोहन मालवीय जी ने ये सारा खंडन किया है। बड़ा उत्कृष्ट है, पढ़ने लायक है। और इस प्रकार से अपने देश में कैसे उद्योगों का विकास हो, इसके लिए सतत प्रयासरत ये सारे लोग थे। और एक बड़ी विशेष बात है कि मदन मोहन मालवीय जी ने जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ तो आइंस्टाइन को भी काशी हिंदू विश्वविद्यालय में आकर यहाँ प्राध्यापक बनने का न्योता दिया था। ये भी एक बड़ी विशेष बात है। कई ऐसी बातें हैं, आचार्य आशुतोष मुखर्जी ने भी ऐसी कई बातें शायद सोची थी, ऐसा आज लगता है। उन्होंने कहा सबको कि आप जर्मनी में जाकर अध्ययन कीजिए, विज्ञान को अध्ययन करने के लिए इंग्लैंड में मत जाइए, क्योंकि जर्मनी ये इंग्लैंड का शत्रु है और शत्रु के शत्रु को अपना मित्र बनाना ये अपनी एक कूटनीति होनी चाहिए। यानी गुलाम रहते हुए भी अंग्रेज़ों के विरोध में अगर कुछ खड़ा होना है, संघर्ष करना है, तो शत्रु के शत्रु को अपना मित्र बनाना, इस प्रकार की सारी बातें करनी चाहिए। तो ये सारी बातें करने का मन हम इतिहास में जाकर देखेंगे तो ये सारी बातें दिखती है कि आशुतोष मुखर्जी सबको ये बताते थे, विशेषकर मेघनाथ साहा, सत्येंद्रनाथ बोस या आघारकर, डॉक्टर आघारकर जिनके नाम से पुणे में एक इंस्टीट्यूट है, आघारकर रिसर्च इंस्टीट्यूट, इन सभी को उन्होंने दिशा वो दी थी। और हम जानते हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी काबुल से जर्मनी में गए थे। तो ये एक दिशा इस प्रकार की वैज्ञानिकों के मन में चल रही थी कि जर्मनी ये एक प्रकार का अंग्रेज़ों से भी आगे बढ़ने वाला ऐसा देश है
उसको हमने मित्र बनाना चाहिए और उसके लिए प्रयास इस प्रकार के चल रहे थे। तो ऐसी कई बातें ध्यान में आती है अपने देश में, तो इसका भी एक विचार करना चाहिए। अपने देश में सामान्यतः स्वतंत्रता आंदोलन को एक राजनीतिक संघर्ष ऐसे देखा जाता है, लेकिन विज्ञान के क्षेत्र में भी अंग्रेजों का जो शस्त्र था विज्ञान, उसको आत्मसात करते हुए अंग्रेजों को ही चुनौती देने का एक बड़ा काम इन सारे लोगों के द्वारा हुआ था। सबसे ये सारी संघर्ष की कथा तो हमें आकर्षक लगती है, लेकिन ऐसा लगता है कि इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है इनके मन में जो दृष्टि थी उसको समझने का प्रयास करना चाहिए। जब 1916 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय का निर्माण हुआ, तब उसके उद्घाटन कार्यक्रम में जगदीश चंद्र बसु आए थे और उन्होंने महामना का अभिनंदन किया और कहा कि आपने हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज का अनुकरण या नकल नहीं की है, तो आपने भारत की नालंदा की तक्षशिला की परंपरा को पुनरुज्जीवित करने का प्रयास किया है। और आगे चलकर वो कहते कि अपना देश ऐसा था कि जहाँ से ज्ञान की निर्मिति होती थी, तो आधुनिक विश्व में भी जब तक विज्ञान में अनुसंधान करते हुए ज्ञान की निर्मिति नहीं कर पाएंगे, तब तक अपने देश को जो सम्मान मिलना चाहिए वो विश्व में नहीं मिलेगा। तो इस दिशा में कार्यरत रहना है। तो इस प्रकार की कल्पना उन्होंने की थी और मुझे एक बड़ा संयोग मिला कि 2006 में डॉक्टर अब्दुल कलाम पुणे में आए थे और अब्दुल कलाम जी ने हमें 1998 में एक बड़ा पुस्तक प्रकाशित हुआ था, विजन 2020। उनकी कल्पना थी कि 2020 में अपना देश विकसित देश हो और उसकी सुंदर कल्पना वो रखते थे। तो पुणे में जो एक दीक्षांत कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के आए थे, तब वहाँ के युवकों को उन्होंने एक छोटे वाक्य में विकसित भारत कैसे होगा इसका सपना दिखाया। तो वाक्य था, लेट अस ब्रिंग बैक द डेज ऑफ नालंदा, ऐसा उन्होंने कहा। ये दिन वापिस आएंगे तब हम कह पाएंगे कि भारत भी एक विकसित देश है। तो यही कल्पना 1916 में एक प्रकार से जगदीश चंद्र बसु ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय के उस शुभारंभ के कार्यक्रम में कही थी। तो इस प्रकार की ये दृष्टि है वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सभी की कल्पनाएं है, विवेकानंद से लेकर भगिनी निवेदिता, बहुत सुंदर हमें पढ़ना चाहिए। भगिनी निवेदिता का जो संकलन है विचारों का 5 खंडों में, उसके 5वें खंड में एक बहुत सुंदर आलेख उन्होंने लिखा है, आर्टिकल है, हिंदू माइंड इन वेस्टर्न साइंस, इस प्रकार का उसका शीर्षक है। और उन्होंने भारतीय मन, हिंदू का मन, और वो जब विज्ञान के क्षेत्र में कार्यरत होता है तो क्या क्या बातें निकल सकती है, इसके बारे में सुंदर वर्णन किया है। और मूलतः जगदीश चंद्र बसु उनके सामने थे। तो ऐसी कई बातें, एक प्रकार की एक सुंदर चित्र स्वतंत्र भारत का इन लोगों के मन में था, उसको समझने का अधिक प्रयास हमें करना चाहिए ऐसे लगता है। संघर्ष की गाथा तो हमेशा आकर्षक लगती है, लेकिन इनके मन में जो स्वतंत्र भारत का चित्र था और विज्ञान के आधार पर स्वतंत्र भारत को कैसे विकसित करेंगे इसकी जो कल्पनाएं उन्होंने की थी, उसको समझने का प्रयास हमारे लिए और लाभदायक होगा। क्योंकि जैसे अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अमृत काल में हम प्रवेश कर रहे हैं, तो 100 साल जब पूरे होंगे स्वतंत्रता के, तो उन्होंने कहा कि हमें खोए हुए गौरव को प्राप्त करना है। तो इस दिशा में चलने का एक संकेत इन सारे लोगों के द्वारा सतत मिल रहा था, उसको समझने का प्रयास करना चाहिए। तो ये सारी बातें, इस प्रकार का अध्ययन जब हुआ तब सामने आई, उसमें से कुछ बातें आपके सामने रखने का प्रयास मैंने किया। अथर्व फोरम ने मुझे अवसर दिया, इसलिए उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ, और आप सभी ने सुना इसलिए आपके प्रति भी कृतज्ञता व्यक्त करते हुए मैं रुकता हूँ। नमस्ते। Thank you, Jayant Sahasrabudhe ji. I would now like to invite Professor Gautam Desiraju ji for his talk. Respected Professor Murli Manohar ji, dear Jayant Sahasrabudhe ji, Shri Bhavesh Kansara ji, the Atharva Foundation, ladies and gentlemen, I have great pleasure in talking to you this evening. Abhi sun raha hai?
on the topic of Indian thought streams as it relates to modern research in STEM subjects. Sri Jayant ji has given an admirable historical roundup of the damage inflicted on the Indian mind in the 2.5 centuries of colonial rule. My plan for this talk is to touch upon philosophical and epistemological concerns that concern these Indian thought streams. In order to do this, I will speak very briefly about the rise of reductionism in the West, because that is where the story sort of begins for us. It is not my intention to speak about the things that were done in India in the distant past. Even some of the small pieces of evidence we see now, we realize that there were tremendous things going on. But be that as it may, the period of the Renaissance started a fundamental way in which we started thinking about science. And that model for doing science continues till today. And all of us all over the world who are doing science, somehow or the other, adhere to those principles of reductionism that were put in place first through the work of Copernicus, then of course Galileo, mechanics, then Newton, and then as we go along a little later to Robert Boyle, Charles Darwin, of course. So the idea of cause and effect, that effect is determined by cause, cause to effect, this one-to-one correspondence between cause and effect, I think is the bedrock of Western science. Why did it work so well? It did work very well, no doubt about it. I mean, we can talk about the laws of electromagnetic induction, Faraday. Even the quantum theory was all absorbed into this overall scheme, although it was looking little fuzzy. When you first think of quantum mechanics, you think, oh, so this whole classical mechanics. No, that's there and this is also there. They were still able to absorb it into their model. And why did it work so well? Because there were plenty of things to be discovered and they were all simple things. Why do you see phases of the moon? If you see phases of the moon and you also see the moons of Venus, then you will realize that the earth goes around the sun and the moon goes around the earth. There is no other explanation for the phases of the moon. So although it may seem to us sitting on the earth that the sun starts in the east and goes to the west, it looks like the sun is moving around the earth. But Galileo showed that using this experiment, there can be no other explanation. That is the essence of reductionism. In a proper way, if you take ancient Indian thought streams, it was based on holism. And analysis and synthesis were subtly intermixed. You cannot have only synthesis or only analysis. If you do only synthesis, you will get black magic. And if you do only analysis, you will not. Because the problem is when you analyze things, when they say analysis and synthesis, the key to Western science, the way of doing it, is to take some phenomenon, split it up into small bits. That is analysis. Then you take the small bits and try to put them all back, then you get synthesis. As long as there is a one-to-one correspondence, as long as the little things are good models for the big thing, then this system works. So all their success stories are things of this type. What happens in actual fact
when we get into slightly different things is that when you try to put these little things together, you don't get that big thing. What does that mean? It means that in the process of splitting this thing down, you have lost some essential information. It is not a matter of detail that you have lost. You have lost some essential information. That X factor. And since you don't have that X factor, when you do the process of synthesis, you don't get. Like I can give you a modern example in drug design. You have a protein. And then you have a little drug which is a small molecule which is sitting in the active site. Now, when the little drug molecule sits in the active site, it does so because of a combination of forces and interactions between the big protein and the little molecule. Now, in the computer, I can take that little molecule and take it out very far away. And then with the computer, I'll try to bring it back. Now, if you understood everything about those interactions and you have parameterized your software properly, then the taking out and putting back, I should be able to come back. This experiment, when computer experiment, when it is done, it only works in 70% of the cases. In fully 30% of the cases, the drug molecule doesn't come back correctly into the active site. So it means this is what I mean. The whole is more than the sum of the parts. Essentially, that is the dilemma that scientific problems started facing. So, this is a brief introduction to reductionism. Now I want to come into the Indian thought streams. I will give you 3 case studies. The first I call structure and property. And this subtitle for that, also known as insufficiency of reductionism. Structure and property, insufficiency of reductionism. Next, intellect and intuition. This would be the inadequacy of reductionism. So first is insufficiency. Second is inadequacy. And the third is complicated and complex. This is the most serious. It is actually the total inability of reductionism to solve a problem. So 3 stages हैं यहाँ. Insufficiency of reductionism, inadequacy of reductionism, and inability of reductionism. In all these 3 cases, you find that Indian thought, Bharitiya thought, will come into place very admirably. And this is why our ancients scored many gains in developing these things. They are highly clever people. They knew exactly what they are doing. It would be another talk to give you some of the examples of where Indian science scored in the old days, but let us take it phenomenologically. Insufficiency of reductionism, structure, property. A key of reductionist thinking is if you know the structure of something, you know its property. So, what it is and what it does is exactly corresponding. And this is again true. I mean, you Galileo threw that thing from the Tower of Pisa, it landed down. So, you are able to dissect something, that analysis part, structure, and property, the synthesis part, one-to-one correspond. Now it is found today that structure and property may not agree so well all the time. Sometimes different structures have the same property. Sometimes the same structure has different properties. So how do you rationalize all these things? Different structure has the same property. Let's take an example of that from the life sciences. It's called homology modeling. Proteins consists of, big complicated molecules made up of little bits called amino acids, like a thread.
So a protein has a function in living systems. It is found that when two different proteins, they have some critical number of amino acids in common, the same location, that is called homology, then the function of the protein is exactly the same. So up to 60-65% it can all be different. The function is still the same. So it is, this is the different structure, same property. Now how does this work? Why does it work? It is because some portions of the amino acid chain are more critical for the function than others. So it's not as clear as it would be. I mean, if I can make a gentle statement in front of Professor Joshi, the whole science and art and beauty of winning elections, sir, is that in the first past the post model that we have, when the percentage of votes comes between 30% and 40%, then suddenly the number of seats that you win goes up tremendously. So there is a non-linearity in that. With homology modeling, same story. 30% mein to the whole functions, properties will all be different. By the time it gets to 40%, chalo, it will be exactly behaving the same. So see, it's a question of non-linearity. How do you address non-linearity? That there is a question. Computers alone may not be able to solve some of these problems. What somebody said, what we need, sir, are not faster computers but faster minds. This is what is missing. And when Western methods of reductionism have failed in many problems, now you realize a need to have other ways of thinking. So this is that. Now let us go to the next topic, intellect and intuition, the inadequacy of reductionism. Now in the first part, it is just insufficient. Sometimes it works, sometimes it doesn't work. So that is now we get to inadequacy. Now there are two ways in which deeper thought proceeds, and this is what philosophers comment about extensively. So you have intellect driven thought. This is the Western system. So you read and read and read and read and you absorb all the facts and figures. And once you have all the facts, then you are able to derive exactly what happens in some situation. So once again, cause and effect are clearly connected if you base your entire system on just intellect. And intellect leads to hardcore reductionism. Now, on the other hand, the Indian systems of philosophy were not scared to think of intuitive thinking. What is intuitive thinking? I think it is summarized by many people, but one of the best readable versions is Radhakrishnan's book on the idealist view of life. So taking from Shankara's idea of monism, and let us go to that particular theory, there comes a certain non-linearity in the deeper movements of thought when suddenly from going from intellect you make a jump, an intuitive jump towards the correct answer. So it is not that, intellectual thinking demands a considerable amount of, intuitive thinking demands a considerable amount of intellectual knowledge. You have to read plenty. You should know all the facts and figures. But suddenly there comes a point where all that is not enough and suddenly you have to make that jump. And this jump happens unconsciously. Now, a very familiar example is Ramanujam is more divine. It goes even beyond intuition. But it is. It is his intuition, but Ramanujan I don't think can be described in philosophy books. I don't think even Radhakrishnan could have described Ramanujan. They were good friends, incidentally, I am told. There is a limit of it. There is a limit. Correct. Now, let me give you this most wonderful example from my own subject. So far, I have not talked about chemistry. So,
अभी ये chemistry में भी तो एक example देना पड़ेगा, so I will give this example. This is probably one of the greatest chemical discoveries ever made in the world. And this is Mendeleev's discovery of the periodic table. Now, what is beautiful about this is that for some years, starting around 1860, chemists all over the world had realized that the properties of the elements had something to do with their weight. They were not exactly sure what it was. But certain properties seemed to be repeating mysteriously. When you wrote all the elements down in the order of their weight, the eighth one looked like the first, the ninth one looked like the second, 10th one looked like the third, and so on. So they found that there were some relationships between these elements. Why it should be and all that, but they saw that some relationship is there. Then they kept on putting more and more and more things. And after some time they found the relationships vanished. And they could determine weights very well in 1860. They could weigh things very proper. That's the only thing they could do. They couldn't do anything else except take something, burn something, weigh something. They did that very well. So they got these atomic weights, and then the chemists all over the world were thinking. This was the holy grail of chemistry around 1860. Then comes this crazy man, Dmitri Mendeleev. Far away, he was somewhere in Siberia, I am told. He used to run a cheese farm, quite a wealthy fellow. And he was doing chemistry for fun, spare time. So he started all these things and started lining all these elements down. I believe he wrote them all on playing cards, the names of the elements. And he used to play patience with those cards and trying to see what the pattern is. He said there is a pattern somewhere, there is a pattern, but it's not coming out, not coming out. And then he had this intuitive flash. Because he started putting these cards, that is structure, because he was putting them according to weights. Then the property was not matching after some time, as I said. So then what he did, he took the cards and put them under the properties, not according to the weights. Then he suddenly realized one thing. What it meant was that somewhere where the properties were not matching, and then he matched the property, some empty space is coming, no? He said that empty space corresponds to an element that has not yet been discovered. So he said, my model is perfect. Something has not been discovered out here. And so I'm going to leave a gap. Then he went further than that. The most important example is the story of aluminium and gallium. So aluminium is a well-known element. There was one gap below aluminium. And then he said an element will be found which looks somewhat like aluminium, and it will have this property. This will be its density. This will be the color of its oxide. This will be the color of its sulfate. He made all those predictions. And he was a big Sanskrit buff, because in those days Sanskrit was a big thing in Northern Europe. So he called aluminium, below aluminium he called Eka aluminium. And similarly in silicon he put one Eka silicon. Now then what happened after a few years? So he said that this is how it is. And see, this is totally allergic to the Western way of doing science. He is saying that some data will be found which will prove my model. Professor Joshi, I ask you, will anybody, if you send something like that to a journal today, will they accept all these things? Abhi data aayega, future mein, and it will fit my model. Okay, so then what is this going to, what is the proof of his thing? One fellow in France called Lecoq, he actually found gallium after some time. And he did all these things, and then he wrote one letter to Mendeleev. Dear Professor Mendeleev, I think I have got this element that you have mentioned. But you know, you have made a small mistake. The density of gallium which you have given in your prediction is not like that. It is slightly less than that. So he gave him that new density. So Mendeleev wrote, Dear Mr. Lecoq, your experiment is wrong, go and do it again.
That means he knew what that thing should be. And Radhakrishnan says in the idealist view of life, he says if the essence of intellectual thinking is communicability, then the essence of intuitive thinking is certainty. You are sure that that is what it is. Then Lecoq goes and does the experiment, and then he wrote one very humble letter to Mendeleev. I have purified my sample and the density comes like what you have said. So, okay. The whole matter was... So, see, this is not very far from our Mahavakyas. When you say Tatvamasi or when you say Aham Brahmasmi, at that moment, sir, ladies and gentlemen, Mendeleev is actually gallium. There is no difference between him and gallium there. That is the essence of intuitive thinking. And that, ladies and gentlemen, is unique to this Bharatvarsha. It is nowhere else. And see, after this, the story goes on. Jayant has mentioned so many things about Nobel Puraskars and all that. Professor Mendeleev never got that Nobel Puraskar. Even though he lived for 6, 7, 8 long years after the Nobel Prizes started. So according to them, it was not just white skin and dark skin. They said that you might have got the right answer, but you got it in the wrong way, so you know. They are not even willing to accept this new way of thinking. That is the motto of the story. And you see, it is... I always say, there was another chap in Germany called Lothar Meyer who was still struggling with those atomic weights and not getting the answer. Lothar Meyer was there and then Mendeleev got the right answer. I always say, and now this will come to the next topic which I would like to address, the civilizational divide. Lothar Meyer could not have got the right answer because he was a German. He comes from the country of Kant, who lived in Königsberg, in northern Germany. Mendeleev came from Russia in Petersburg. The civilizational divide comes there. Somewhere between Königsberg and Petersburg is where this civilizational divide comes. Civilizational divides are extremely significant because we are fundamentally different in different civilizations. Today, Vladimir Putin says that Russia has simply wasted its time since the time of Peter the Great, thinking that we are part of the Western civilization. He said we are not. He says we are a Eurasian civilization. And anybody who has visited the Soviet Union, which I am sure many of us have at many stages, will simply see when you go to that, it was Soviet Union, then Russia today, you will simply see the vast diversity, and if they don't even look like white people in some cases. So when you say civilizational divide, this civilizational divide, ladies and gentlemen, is fundamental. It is got to do with our way of thinking itself. The very thought across different civilizations are different. If we try to deny all these things, sir, then we cannot make progress in science. Because I tell you, Americans are best at being Americans. Germans are best at being Germans. Indians are not best at trying to become Americans. Indians are best at being Indians. And indeed, doing science and all this, the modern problem, Mendeleev problem periodic table was contemporary to his time and era. He could solve it with this methodology. He got the answer. And you see, this is a fundamental, and I think this is something we have to incorporate. Finally, let us take complicated and complex. Now it is a total inability and breakdown of the reductionist way of doing things. What is complicated and what is complex? Simple example I'll give you from roads. Suppose you take 5, 6 roads, which is very common in Bangalore, at least I don't see it here. Come and meet in one circle. Then there is one traffic lights at
each where the road comes to the circle. So you're there in a taxi or an auto or your car or something. So you go on waiting until ever so often you will get one traffic light coming in your favor, 2 cars will go through. This is something all of us have experienced all the time in that kind of system. That is the example of a complicated system, because in any complicated system, if there is a small breakdown, the whole system breaks down. So for example, if one of those lights goes off among those 6 lights, then there is full chaos in that junction. Nobody knows what to do, and they all start running here and there and trying to break the rules. Or suppose all go off because of a malfunction in power, which is very common in Karnataka today. Now all go off. Then what happens? The complex system, on the other hand, is some of these intersections and flyovers which you see today. Big things that look like jalebis from the sky. Starting with the US Cloverleaf crossing from the autobahns and all that. So when you have these system of roads, no car ever stops. Everything keeps moving all the time. So complex systems are like that. They are not designed to break down so easily. A complex system is self-healing. And a complicated system can break down very easily. So if you take a complicated system, how do you solve the problems of a complicated system? By putting in redundancies. Suppose I have a lab with 10 students and I need to do a particular work which requires 10 students. Very often, some student will go away, he'll fall sick or she will say something else. So I overcompensate and take 13, 14 students and put them on the project, knowing that some of them will not be there. That is what is called redundancy. India was a beautifully working complex system by the 7th or 8th century AD. Everything was moving like that intersection of roads and everybody was doing that thing. Everybody knew what they wanted to do. Gradually, with some of the things that Jayant ji said, we went from a working complex system to an unworking complicated system. We tried to start putting in redundancies. Swami Vivekananda says, the problems of India are very complicated. He used the correct word, complicated. He didn't say complex. So complicated though it means it is, and then you have got to go on putting redundancies. In the modern political context, the biggest breakdown in our complex system came with partition. So suddenly we have to put in redundancies. What the redundancies we put? All that Article 25, Article 20, all those things that we have done, no, from 25 to 30. Those are our redundancies that we have put in to try to solve that original breakdown. And the redundancies that we have put in are not enough to solve that problem. So you can't go on putting amendments, sir. You can't go on, and somehow hope that it won't fix itself. Partition, let me say, is the fundamental issue that came and hit our civilization. And all of us have to somehow realize that, because it was a civilizational break. A civilization needs land. It is only defined by geography. You cannot dream up some civilization by sitting in Toronto or Nebraska or some strange place like that. We lost the plains of the Indus. Essentially, they have gone out of our collective memory. And the challenge for us today is to somehow, and as I said, this civilization, the thinking is different across civilizational boundaries. These are the issues, sir, which have to be put into textbooks, put into curricula, put into various systems to get little children to understand it in a simple way from the earliest point. I can just go on and on. I mean, systems biology, supramolecular chemistry. Suppose you take Jyotish, Ashtavarga. Normally in simple Jyotish, you will say one planet is an enemy of another planet. So suppose you say traditionally Sun and Saturn are arch enemies. So if the two are glaring at each other in a horoscope, too bad for that person who has got that combination.
But in the Ashtavarga system, they say you can't simply say that sun is an enemy of Saturn. They say the sun is influenced by 7 other planets. So which could either make that sun stronger or weaker. Similarly, Saturn is influenced by 7 others. So everything influences everything. So in such a scenario, when you put something like this, that is a complex system. And we had Ashtavarga in place from way back. This is nothing some new thing which somebody has started now. So wherever you go and wherever you find fractals, monsoon, cancer. Why is cancer and type 2 diabetes different from other diseases? Being a complex system, it heals itself. Heals means heals for its own benefit. It kills the person. But whatever drug you put, that disease will circumvent the drug and go somewhere else. So you see, this is really what is happening. And I would say that in this kind of a scenario, when the reductionist thinking is shown to be insufficient, inadequate, and unable to solve the problems, there is a real big need for us to radically, sort of bring our Indian ways of thinking. You can call it Hindu way, you can call Bharitiya way, it doesn't matter. It's all fighting about words. And bring it back, sir, in the syllabuses. Professor Joshi, million thanks for doing what you did with some of those textbooks when you were the HRD minister. अभी ये तो नहीं हो रहा है. And करने दो, sir, let them do. But the thing is, what the whole question nation is asking is, how fast, like chemistry is always about kinetics and thermodynamics. Do you go for the best solution or the fastest solution? In the modern world, I'm sorry to say, Jayant ji, it is only the fastest solution which people have to take now. And I've said it a million times in talks. Better to be somewhat right on most occasions than to be fully right on 1 or 2 occasions only. That somewhat right is actually what this country needs today. It needs it in our education policy. It needs it very, very badly. And somehow we have to bring the urgency of all this, try to bring in our whole setup and try to refashion. This is, both strategy and methodology are needed. Strategy is what to do. Methodology is how to do it. And these are independent. If you start mixing strategy and methodology, you get into great trouble. You get into very, very big trouble. And before I finish off, I'll just do if you'll excuse me, Atharva people, little sales gimmick. So I've completed a book which is called Bharat India 2.0, and this will be released on 15th August 2022, a 75th year of our independence. And this traces a structural chemist who is supposed to be quite well known in his subject. What's he doing writing about the Indian Constitution? So I have written this book. In fact, this afternoon I went to my publishers and it's in the very final stages. So the book is going to come out. And it has to do with our Constitution, why it was written the way it was written, the limitations that those had, what we have done with the Constitution in 75 years, the fact that there are some very, very basic flaws in that document. So I hope that you people, ladies and gentlemen, you enjoyed what I'm saying. But go there and buy that book. It's coming out. Discount for the audience today. आदरणीय मुरली मनोहर जोशी जी, Professor Gautam Desiraju ji, Jayant Sahasrabudhe ji, Atharva Forum, and beloved guests, namaste. I don't remember when I first heard STEM in education. It must have been about 10 years or so back, because STEM is a fairly recent acronym. And as acronyms go, not a very catchy one either. Just to make it clear, STEM is science, technology, engineering, mathematics, not science, technology, engineering, MBA, which is what usually happens. So STEM as a movement started in the US about 20-25 years ago. There were several reports that were coming out which linked science and technology to the nation's progress. And some of the reports were very critical. They said that the US will have dire consequences if the workforce was not conversant with the latest in science and technology. The idea was that economic growth needs tangible innovation.
tangible innovation needs knowledge-based education, and knowledge-based education needs focus on science and technology. So this is roughly what the reports were talking about. So as the recommendations of the reports became a reality, STEM as a movement, gathered steam. It spread everywhere, kind of like fast food and web series that happens nowadays, The repercussions of STEM were felt and are still felt not only in the education system in the US, but also in the immigration policies. Because a lot of work visas are given to immigrants with a STEM background. Ironically, a lot of those work visas are given to immigrants with a STEM background from India. And yet, in India, we feel the need to talk about more STEM. Somewhere there is this irony that we need to look at. Also, in the initial stages of the STEM movement, there was this question of what are those sciences that we are talking about, the S of STEM. Specifically, the social sciences folks were pretty vocal. They said, hey, we are there somewhere, okay? There is science in our name, so it should include social sciences. The economics folks were also there. Probably they wanted the E of STEM. And at least they could say that, hey, as economists, we use advanced mathematical and statistical models and predict the economy to 2 decimal places. So there was this argument that went on. It still goes on. But the NSF in the US, the National Science Foundation, they basically said that we are going to define STEM. STEM is science, technology, engineering, mathematics, and social sciences. So STEM took on other aspects as well, such as STEAM, including arts, and lots of such acronyms came about. The one that has stuck right now is STEM. And the reason for giving this background is for us to understand that STEM was a movement that started in the US. And if we are talking about importing that movement into India, we also need to talk about what is the extent of relevance that we need to have, or that we need to look at. As a movement, okay, I am not saying that we shouldn't be pursuing science and technology. That would be a supremely irresponsible thing to say. And I won't say it myself because I am a mechanical engineer, although ended up working in software companies at some point, but still a mechanical engineer. So, but the point is that whenever we are talking about such movements, they come with their own original rationale, their own intended impact, and their own overarching influence. This is happening in the US, right? And it is important for us to realize that when we are talking about the STEM movement in India, we need to understand what is its relevance, what is it that is impacting in India. And, I'd like to spend a little more time on that. A simple example of that would be, as I said, the STEM and social sciences. Are we defining STEM with social sciences in India? Because we keep using the term as if we know what it is, right? We take it for granted that STEM is sciences, but we don't know what we define there. I am not professing that you use STEM with social sciences or without social sciences. That is a different debate. But whatever rationale we have, it should be rooted in our own relevance. It should be rooted in our own constraints. It should be rooted in our own demography. There is no point in importing a definition from somewhere else if it doesn't apply to us, right? And then the question is, would we be fine if, let us say, courses on arts are included in the engineering curriculum? It would be nice to appreciate the second law of thermodynamics as much as we probably appreciate the philosophy of Kant. And, in such cases, it's always Kant and Popper and Hegel, You hardly ever come across Shankara, Ramanuja or Gargi. And that is a debate for, some other day. So, that is the past. I always like to dwell a little bit upon the past because it provides a context. And it was really great to hear, the history and the thoughts behind it, because those are the contexts that we are talking about. It's like we can't fire an arrow without pulling the bowstring back. So in the US, what happened is STEM, as I said, it became a movement because
it literally advocated that US should remain technologically relevant, technologically at the forefront by adopting STEM. Is that what we want to do with STEM? Our focus on STEM is probably going to be looking at problems involving security and defense, healthcare, agriculture, governance, and maybe other societal issues, right? And therefore, the question comes, how do we align STEM with the challenges that face today or that we foresee in the future? Should we change the education system? Should we change the curriculum? Should we change the textbooks? Somewhere we need to start. And that is where the National Education Policy NEP comes in, and it was launched in 2020 after maybe a short delay, I would say, and it was launched by the then Ministry of HRD. And I would say that the chairman of the drafting committee, Shri Kasturi Ranganji, and the team, they've done a humongous job in terms of looking at the landscape of the education system in India, recommending more or less a revamp in many areas, and envisioning the impact of these changes in the next 10, 20 or 30 years. The NEP at a fundamental level is about achieving better outcomes. Okay. And this may sound trivial, as mathematicians like to say, but we've been caught up so much with inputs, and inputs are things that go into the process. We've been caught up so much about inputs that somewhere we have forgotten that there are outcomes towards which we need to work. There are goals towards which we need to work. And the good thing about NEP is that, it talks about outcomes. And by extension, we also need to understand what those outcomes are. What is the outcome that we are looking at from a STEM approach in India? So I interview a lot of young engineers. I interviewed one last week and I asked him, why are you looking to change your job? His blunt answer to me was that I want to earn more money. Okay. And I would have been more surprised if he told me that he wants to save the environment or make the world a better place or, something like that. Yes, we all want to do that. But ultimately what is happening at an individual level is that people are looking at science and technology to probably earn a better livelihood. And some of us may scoff at such a response. But hey, it is the reality, right? And any framework that we want to incorporate, whether it is STEM or whether it is NEP, needs to kind of take into account that there is a reality that exists like this. They should go hand in hand. And in fact, in the very first line of the book, Indian Philosophy by Dr. Sarvapalli Radhakrishnan, is that for thinking minds to blossom, for arts and sciences to flourish, the first condition necessary is a settled society providing security and leisure. Now, the NEP doesn't obviously take this view. It considers education slightly differently. It considers education as the single greatest tool for achieving social justice and equality, right? It is true. However, we also have to look at the demographic dividend that we have today as an advantage. The young population that we are talking about, the demographic dividend is a cycle, which means that, we are slowly going to look at this dividend going away in the next 20, 30 years. So what we need to do is to make sure that we are ready and we need to act now, right? And there is also the whole aspect of global industry trends. There are market disruptions that are happening. We are seeing the pandemic, the war, a lot of these things. They tend to render old systems and old technologies more or less defunct. Now, even before all of this, the NEP kind of recognizes the need for all these challenges that students face, especially in the STEM background, with a STEM background. And the NEP says that the future workplaces are going to demand a lot of new things, like critical thinking and problem solving, interdisciplinary approach, and so on. So I'm going to use the word multidisciplinary for the next few minutes because it is there everywhere in the NEP. The NEP has certain themes. Multidisciplinary or interdisciplinary is one of them. There is also a lot of liberal arts that is strewn into the NEP, but I'll maybe talk about that a little while later. So, on the interdisciplinary aspects, let me ask a very simple question, which is, do you associate a car with mechanical engineering? Right? My guess is that if you're above 30,
you most probably would. In the 90s, when I was doing my engineering, one of my professors would say with evident amusement that 50% of the cost of the car is electronics. So this was some 25 years back. Even then, a car was hardly a mechanical engineering construct. It had a lot of mechanical engineering, but half the cost was coming from electronics. And that is the nature of interdisciplinary technologies. And today, whatever you see, whether it is smart cars, or smartphones, fitness bands, drones, satellites, even trains and buses, transport systems, anything where you see smart there is multidisciplinary in nature, right? And what we call modern technology is a confluence of all these technologies kind of brought together. And when I took up mechanical engineering, I was told that it is an evergreen field. It will always be there. Okay. Today, the only way mechanical engineering can remain evergreen is by taking in electronics, control systems, systems engineering, production engineering, programming, artificial intelligence, machine learning, put everything and still call it mechanical engineering. You take any device today which you will associate with mechanical engineering and you will see a lot of different technologies which are there. If any of you are, in the business of some of these products, you would realize today how difficult it is to look for engineers who know some of these topics. They'll come with certain single disciplines in mind, but it is very difficult to do that. And I would like to take one example, something which has been in the news for some time, which is vehicle electrification, electric vehicles. The journey of electric vehicle development starts from batteries. And today, if you look at the batteries that are used in cars and vehicles, you also need to understand where they are coming from. Right? There is one which is global supply chain risks because of war, because of the situation that we have with China. And therefore, what ends up happening is that, there is a constraint that gets created for batteries. Now, the question is, do we twiddle our thumbs till the geopolitical situation improves? Obviously not. So what is happening is that there are startups which are emerging who are looking at what could be the alternative materials that can be used for these batteries. Can we not use something that we have in India? Do we really need to depend on somebody else? And a lot of this research starts from fundamental chemistry. Okay. And what happens after that? Once you talk about fundamental chemistry, battery chemistry basically, from there it goes into a lot of different disciplines before it even sits inside the car. Okay, it gets into battery thermal management because battery shouldn't get heated up. It gets into battery charging, discharging cycles, how good the battery is. It gets into battery electrical performance. And there is battery management system which basically ensures that you're having a good experience when you're riding an electric car or parking it in the Delhi summer afternoon sun for a long time. That nothing should happen, right? So behind the nice ride that you have, or the nice phone that you have, the nice pictures that you take, there is a lot of technology that goes into it. And there is always a demand for experts who are able to make sense of all these multiple streams of requirements that come to design and develop any product. One of the alternatives that India today is looking at is the National Hydrogen Mission. And it is not just about the zero carbon talk that is going on. There is always an aspect of the environment because it is nice for us to hear about it. But it is also an Atmanirbhar alternative for us. Today if you look at the global scenario for hydrogen, there is no single country which can say that, hey, we are doing much better than what other countries are doing. So we are in it at the right time. Using National Hydrogen Mission, we are at the cusp of maybe, creating something innovative that could disrupt how the world looks at clean energy, right? So there is a lot of momentum that's going on. And coming back to the NEP, I just wanted to give some examples to talk about the multidisciplinary nature of the industry today. And the NEP recognizes that and says that all institutions need to be multidisciplinary in nature. In fact, it is so vocal, it actually recommends that single discipline institutions should be closed down unless they become multidisciplinary in nature. There are some statistics like, for example, there are 800 universities and 40,000 colleges in India.
40% of which have only single discipline. So you could imagine what is being recommended here. But behind all of that, there is a simple message, which is that all disciplines should be available to all people. So if you want to study engineering thermodynamics as well as classical music theory, you should be able to do that. And I wouldn't mind listening to a classical music symphony on entropy or latent heat or something like that. Create new creative streams out of it. And in order to achieve this, and I don't want to get into too many details of the NEP. The NEP is a very long document, takes a long time to read. But what the NEP suggests is that there should be 3 types of higher educational institutions. Type 1 is research, institutions that can provide world-class research. These are big universities focusing on research. Type 2 are teaching universities. They focus on high-quality teaching, maybe a little bit of research, large universities. And type 3 are colleges, smaller, focused on teaching, but still multidisciplinary in nature. Okay. Now, what the NEP proposes are 2 missions, Mission Nalanda and Mission Takshashila. And I was glad when Nalanda and Takshashila came up earlier for the discussion. And Mission Nalanda is that there would be 100 research universities and 500 teaching universities by the end of 2030. And Mission Takshashila says that every district in India should have at least one multidisciplinary higher educational institution by 2030. And the names Nalanda and Takshashila were obviously chosen because they were university towns and those were interdisciplinary universities, which is not very surprising because this whole division of smaller and smaller disciplines is a rather recent phenomenon. And we are already seeing some positive changes as we speak, right? Some of them are driven by recommendations from the NEP. Some of them are driven by global supply chain risks that I talked about, even local aspirations. And some of them are also supported by various initiatives from the government. You would have talked about the hydrogen mission, the FAME and FAME2 for electric vehicles, and so on. And most major universities today have incubation centers. And what these incubation centers are doing is they are supporting the startups that are emerging locally. And in just the last 5 to 6 months, I have met startups which are working on technologies as diverse as satellite deployment, 5G, healthcare, urban mobility. You think about it, there is a startup for that today. And they are being ably supported by these incubation centers. And one of the changes that has happened is that the industry has become an active participant in all of this. And this is important because what the industry does is it kind of closes the feedback loop. There is always this, we always used to say that, hey, there is no industry-academia nexus. Industry doesn't support academia, academia doesn't know what is happening in the industry, and this led to a lot of gap between the curriculum and the practical aspects. And a lot of that is changing, right? And ultimately the industry becomes the battlefield because yes, startups ultimately need to sell it somewhere. And if there is a battlefield, then there would be weapons as well, and that is where R&D or research comes into the picture. So one of the recommendations, and I would say one of the most critical recommendations of the NEP, is to set up a National Research Foundation, an NRF. The NEP makes no bones about the state of research in our country, so I don't want to get into the statistics of this, but which is that what is allotted for research today as a percentage of GDP, in India, it fell from 2008, which was at around 0.8% to 0.69% in 2014, which is where it remains today, according to the NEP. In contrast to that, US spends about 2% or higher. Korea and Israel spend about 4% of their GDP towards research. India filed about 45,000 patents, out of which 70% were filed by NRIs. So in short, it is a sad state. So the idea is that the NRF will be set up, at the time of the NEP, the allotted budget for the NRF was 20,000 crores. I am not sure, what is the current status right now. But the idea was that the NRF would build the capacity to provide research, long-term strategic research, in 4 areas.
that science, technology, arts and humanities, and social sciences. You could call it STASH, but I don't want to be very cynical about it. And the kind of projects that the NRF is talking about, or projects like national cleaning of rivers or elimination of diseases such as malaria, preserving the local language, art and culture in certain regions. So these are the kinds of projects that the NRF is talking about. So you have the NRF, right? And I talked about Mission Nalanda, which is what the NEP is recommending. And then you take the startup ecosystem, with the incubation centers and all of that. So if we put all of these together, there is not just a closing of the feedback loop, but there is an enormous potential that we see there. Enormous potential, not just in terms of more and more startups coming, but it also in terms of the potential impact that it would have on several aspects of our nation and the employment that it generates and all of that. One of the things that also academic institutions have realized besides all of this is that now they need to start focusing on the industry trends. So for example, there is a lot of push both from the industry and the government to move towards electric vehicles. But if you take an engineering course, you will still learn a lot about IC engines, thermodynamics, all of those. Yes, they are necessary to learn, but if I graduate as a mechanical engineer after 4 years, what capability do I have to say that I am conversant with the vehicle technology that is used in electric vehicles? Now, this is a question that a lot of institutions have asked. So what they've done is they've revamped or tried to revamp a lot of their courses and say that, hey, we are going to offer you a master's in electric vehicle technology, okay, rather than master's in mechanical engineering or whatever it is. So in that way, what is happening is that there are new programs that are being created, and that is one of the aspects of NEP as well, which is to provide autonomy to educational institutions to set up their own syllabus and the curricula. Now, there are certain practical aspects that I would really like. If I look at my own experience, I would have really liked to learn about, running and starting a business as a part of the course, looking at corporate laws, a lot of corporate laws that we have, intellectual property rights. These are things that, we probably need to learn as a part of our STEM curriculum. But I am not complaining. What I feel is, something which is very positive. What I am seeing is a zeitgeist of India moving towards the science and technology era in the next few years. And, I would like to just take the next few minutes kind of bringing this to a closure. I recently met a few interns from an engineering college. I was amazed at their understanding of different technologies. I was talking to them, hey, what do you like to do? What do you like to create? They are all going to graduate as mechanical engineers in the next few months. But their knowledge of programming, control systems, and multi-disciplinary technologies like simulation and design was just amazing. It was better than an engineer graduating 10 years before. And that also got me thinking we all have a tendency to look at our younger generation as upstarts. But I must say that, we have a generation that is confident, aware, and awake. I almost said woke, but awake. Keep up the great work is what I would advise to the younger generation. Great work in science and technology. Okay. And I really don't want to put down that kind of an excitement. The interns that I've taken as a part of, the company that I work for, and we've just given them free hand to say, hey, use AI and ML to do whatever you want. Okay. And AI itself is not a new technology. It's been around for a number of years. So there is a very interesting paper called Knowledge Representation in Sanskrit and Artificial Intelligence. This was published by Rick Briggs from the NASA Ames Research Center in 1985 in the AI magazine. 1985 AI magazine. So there was a magazine on AI that existed about 40 years ago. I would really recommend you to read this paper for various reasons. You might have heard of Sanskrit being best suited language for computer programming. So this confusing myth comes from that paper only. Okay, I mean, via a lot of Yahoo Mail forwards and today WhatsApp forwards and all of this. But I wouldn't say that it is a myth or a misinterpretation, that the way Sanskrit and artificial intelligence are treated in that paper is really worth reading. And remember, this is a 40-year-old paper. Now, coming back to the NEP kind of recognizes a lot of this on Sanskrit. It talks about, our heritage. It talks about our prowess in architecture, navigation, shipbuilding, metallurgy, chemistry.
all of these areas. And the one thing that it does is it calls all of this with the name multidisciplinary, and it clubs them with liberal arts. Okay, so I would just like to read a small statement. So the NEP suggests that the notion of knowledge of many arts, that is what is called liberal arts in modern times, must be brought back to the Indian education, as it is exactly the kind of education that will be required in the 21st century. My personal opinion, probably coming from a very nice intention, but I have some issues with this kind of a statement, because the NEP associates liberal arts, the word liberal arts, with modern education, ancient heritage, multidisciplinary learning, cognitive thinking, even constitutional values, creative pursuits, personal development. Even the Greeks would not have such a liberal interpretation of liberal arts. So, but final point I would like to make is the NEP's insistence on imparting learning through local languages, especially in schools and even in STEM courses, because we learn better, we understand better, and we retain better. We need, says the NEP, more exposure to our languages in classes, better textbooks in our languages, deeper appreciation of literature in our languages, and also a dictionary which we need in our languages, which keeps pace with the technological advancements. And that would be a good reason to merge arts and culture with science and technology. And further, what happens, it reduces the burden of translation to English. Especially we can understand the local contexts better and appreciate them better. Especially we are going to talk about including social sciences into the STEM movement. So I would like to close by saying that I am very upbeat about the uptake of science, technology, engineering, and mathematics in recent years. We can choose to remain cynical, and we can choose to do something about it. And we are in an era where we are impelled to act. So yes, STEM has a good future, in my opinion. I would just like to end with probably what might be a cliched thought, but what is STEM without root? So I am going to add root, revive and rejuvenate our old traditions. Thank you so much. Namaste. So with that, it's a privilege and honor to invite our chief guest, Adarniya Dr. Murli Manohar Joshi ji, for his talk. बहुत ही विस्तृत फलक पर आज चर्चा हुई है। एक तरफ जयंत जी ने वैज्ञानिकों के द्वारा भी भारत की स्वाधीनता के लिए जो प्रयत्न किए थे और जिनका संज्ञान ज़्यादातर लोग नहीं ले सके हैं, उसकी तरफ इशारा किया। ये एक बाजू में मेरे अगर राइट कहा जाए तो राइट, दूसरी तरफ मध्य में प्रोफेसर देसिराजू, जो हमारे देश के बहुत विख्यात वैज्ञानिक हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने वैज्ञानिक शोध के लिए जाने जाते हैं और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में उनके कार्य को मैंने बहुत नज़दीक से सुना भी है, देखा भी है और उनसे मेरा पुराना परिचय भी है। वो उन लोगों में से रहे हैं जिन्होंने विज्ञान और भारतीय आध्यात्म को और भारत की कुछ विशेषताओं को, जो वो समझते हैं कि एक वैज्ञानिक की दृष्टि से और एक परंपरागत जो उनकी भारत के साथ, भारत की प्राचीन शिक्षा के साथ और नीति और मूल्यों के साथ जो उनका लगाव रहा है, उसको उन्होंने बहुत ही वैज्ञानिक ढंग से हमारे सामने रखा। शायद इतने सरल ढंग से बहुत कम लोग इस बात को रख सकेंगे और मैं समझता हूँ कि जिस ढंग से लोग अपने यहाँ बहुत ध्यान लगाकर उनकी भाषण को सुन रहे थे, तो ये लगा कि विज्ञान और संविधान ये सब कैसे आप इकट्ठा पढ़ा सकते हैं, बोल सकते हैं, ये अपने आप में जानना हमारे लिए बहुत रोचक रहा। और आशा है कि आपकी पुस्तक बहुत शीघ्र ही हमें पढ़ने के लिए मिलेगी।
संसारा जी ने तो एक नया संसार हमारे सामने शिक्षा के संबंध में और विशेषकर स्टेम आंदोलन के बारे में रखा। तो एक तरह से आप देखें कि बहुत बड़ा फलक, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म, बहुत बड़ी डायमेंशंस आज की इस व्याख्यान माला में रही हैं। तो पहले तो मैं जयंत जी की तरफ से कुछ कहना चाहूँगा। उन्होंने बहुत अच्छी बात सामने रखी और उन्होंने जो विशेष उस समय के लोगों की वैज्ञानिक मानसिकता के बारे में बताया और क्या वो सोचते थे, उस संबंध में मैं ज़रूर कुछ और ज़्यादा उनसे कहना चाहूँगा जो ज़रूरी है। उन्होंने एक नाम लिया जगदीश चंद्र बोस का। मैं ऐसा समझता हूँ कि उस पर उन्हें बहुत ज़्यादा बोलना चाहिए था, वो शायद संकोच कर गए। लेकिन मैं आप सब लोगों से कहूँगा कि अभी 8-10 दिन ही हुए जेसी बोस की एक नई जीवनी प्रकाशित हुई है, उसको आप पढ़ें। उसमें विज्ञान और आध्यात्मिकता और साथ ही साथ उन लोगों की जो उस समय विज्ञान से भारत में जूझ रहे थे, उनकी मनोदशा क्या थी। जैसा इन्होंने बताया कि वो भी सोच रहे थे कि विज्ञान के नाते से कुछ देश में करें, वो एक पक्ष है। लेकिन अगर आप इस बात को देखें कि जगदीश चंद्र बोस जो कर रहे थे वो क्या था, उनका जो शोध था, रिसर्च थी, वो कैसे फिजिक्स से फिजियोलॉजी में चले गए, कहाँ से चले थे और कहाँ पहुँचे, और जो पहुँचे वो ऐसी दिशा में था कि जो अगर मेरे एनईपी के मित्र लोग और जो हम नया एक स्टेम की बात कर रहे हैं उसके अध्येता ज़रा समझें तो पता लगेगा कि विज्ञान केवल मैकेनिकल, केमिकल या फिज़िकल तत्वों का एक कमर्शियल प्रयोग मात्र नहीं है। आज के विज्ञान के विषय में गलती से मैं भी प्रोफेसर राजू की तरह से विज्ञान का छात्र रहा हूँ। आज का विज्ञान विज्ञान नहीं है, वो टेक्नोलॉजी ज़्यादा है और उसी के साथ साथ भी कमर्शियल, इकोनॉमिक और साथ ही साथ पॉलिटिकली ओरिएंटेड सब प्रकार से मिला हुआ है, उसको आप अलग नहीं कर सकते। लेकिन जेसी बोस जो कर रहे थे, उन्होंने ये कहा कि भाई मैं इस देश का निवासी हूँ, मेरा मूल तत्व क्या होना चाहिए, समझना क्या चाहिए। तो उन्होंने कहा कि जो समझने की बात है वो ये कि हमारे देशवासियों ने तो कहा है कि चेतन और अचेतन में कोई फर्क नहीं है, और उनका सारा शोध इसी बात को सिद्ध करने में रहा है कि देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन फिजियोलॉजिकल एंड फिजिकल। अभी वो, और उन्होंने साबित किया इसको। वो शायद पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कमर्शियली भी जिस चीज़ को एक्सप्लॉइट किया जा सकता था वो एक्सपेरिमेंट करके दिखाया। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का असली उपयोग उन्होंने किया, जो कमर्शियली आज भी हो रहा है और जो बहुत मात्रा में हो रहा है, जिसका श्रेय उन्हीं को जाना चाहिए था, वो नहीं मिला। लेकिन उन्होंने साबित किया कि अगर आप दो पत्तियों को थोड़ा दूर में रखें तो वो दोनों इसी तरह से आपस में आकृष्ट हो सकती हैं, जुड़ सकती हैं। और इसका मैं आपको महत्व इसलिए भी बताना चाहूँगा कि सर क्रीक ने, जो आजकल के बहुत इस नए विज्ञान के जो सब तरह से चिकित्सा विज्ञान में भी और सब तरह काम में आ रहा है, उसके जो प्रथम शोधकर्ताओं में से थे, उन्होंने एक बार कहा मुझसे कि मैं आज तक ये नहीं समझ पाया, तब उन्हें 50 साल हो गए थे रिसर्च करते हुए, या शायद ज़्यादा हो गए होंगे। मैं तो, मेरे जब से मिले थे वो तो बहुत बड़े थे, मैं उतना एज में उतना नहीं था मैं, लेकिन तब भी उनसे जो बात हुई, उन्होंने कहा कि हम आज तक ये नहीं समझ पाए कि वो सेल जो हमारे शरीर में, हमारे शरीर के किसी अंग में टूट जाता है, चोट लगी और टूट गया, लेकिन कुछ दिनों बाद वो उसी स्थान पर वैसी ही आकृति ले लेता है। जहाँ आपको कट होता है ना,
उस कट पे वो वैसा ही उसी जगह आके उसी शक्ल पे बन जाता है। कैसे बनता है, कौन उसको ये, क्योंकि अब वो तो टूट गया था ना, वो तो कोई ऐसा भी नहीं कि कंटिन्यूटी थी, टूट गया था। लेकिन उसके बाद कैसे वो वहाँ आ गया और वैसे ही आ गया, उसी तरह का फंक्शन करने लगा, ये बोले ये रहस्य मेरी समझ में नहीं आया। अब ये जो तत्व था, ये हमारे जेसी बोस जो रिसर्च कर रहे थे, उन्होंने तो साबित किया कि कैसे आता है। क्यों? क्योंकि चेतना, द कॉन्शियसनेस, वो एक ऐसी चीज़ है जिसको सारा शरीर, या सारा शरीर नहीं, उसके आगे समूची सृष्टि या उससे भी आगे समूचा समझिए परमेष्टि, ब्रह्मांड जिसको कहना चाहिए, से जिससे संतृप्त है, उससे जुड़ा हुआ है। तो ये एक महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही थी। और उस समय जो इन्होंने ये बात कही, जिसको मैं रेखांकित करना चाहता हूँ, कि जब वो अपना भाषण देने के लिए जा रहे थे सबसे पहले विदेशी प्रयोगशालाओं के सामने, तो वो थोड़ा सा संकोच कर रहे थे कि मैं जिन लोगों के सामने कहने जा रहा हूँ वो तो इस सिद्धांतों को मानते नहीं हैं, उनके लिए तो ये एक बहुत विचित्र बात होगी, नई बात होगी, और शायद उनको ये बहुत ख़राब लगेगा कि मैं एक ऐसा प्रयोग करने जा रहा हूँ। तो वो कहते हैं, इस पुस्तक में, नई पुस्तक में लिखा है उनके जीवनीकार ने, कि रात को उनको ऐसा लगा जब वो सो रहे थे कि कोई बूढ़ी माँ उनके पास आके बैठ गई। वो सो रहे हैं, सपना देख रहे हैं कि कोई बूढ़ी माँ आके उनके पास आके बैठ गई है, जीर्ण शीर्ण कपड़ों में बैठी हुई है, बहुत ही कमज़ोर दुर्बल हो गई है। कहने लगे कि जब मेरी आँख खुली तो मुझे लगा कि शायद मेरी भारत माता है, ये मुझसे कुछ कह रही है, और मुझे तब एक चेतना जागृत हुई कि मुझे बोलना चाहिए, और मैं बोला। और आप देखेंगे उसमें कि किस तरह से अंग्रेज़ों ने उनके इस समूचे शोध को एक बहुत ही ओछी निगाह से देखने की कोशिश की, और बहुत उनके ऊपर बड़े एक तरह तरह के वैज्ञानिक आक्षेप भी किए, सब कुछ किया, लेकिन बाद में उसमें से सफल हुए और उन्होंने साबित करके दिखाया सारी चीज़ों को। मगर जो बुनियादी बात है ये कि उस समय उनको नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए था, जो मार्कोनी को मिल गया, क्योंकि जेसी बोस भारतवासी थे, गुलाम थे, और तब वो शायद पहले भारतवासी होते जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला होता। लेकिन जो उन्होंने काम किया, आफ्टर ऑल, बिना उनके तो टेलीग्राफी चल ही नहीं सकती थी, टेलीग्राम चल ही नहीं सकता था। और आज भी जिस स्पेक्ट्रम की आप इतनी बड़ी जिसके आविष्कारों को लेकर के आप समझते हैं कि दुनिया में बहुत बिल्कुल एक तरह की क्रांतियाँ हो जाएंगी, उसके उद्गाता वही थे, उसके मुख्य वैज्ञानिक प्रस्तोता जेसी बोस थे। इसलिए जो बात इन्होंने रखी थी उसी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाना चाहता हूँ कि जिस समय रॉयल सोसाइटी की स्थापना हुई, उसकी स्थापना करने में बड़े बड़े वैज्ञानिक थे उस समय के। बॉयल थे, रॉबर्ट बॉयल बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, और भी ऐसे 10-12 लोग थे, और वो सब के सब एक्सपेरिमेंटलिस्ट थे। ये सोचते थे कि भाई एक्सपेरिमेंट करने चाहिए। और पहला एक्सपेरिमेंट जिसका उल्लेख रॉयल सोसाइटी के अभिलेखों में है वो ये है कि ये पता लगाया जाए कि मरी मछली का वज़न ज़्यादा होता है कि जिंदा मछली का वज़न ज़्यादा होता है। और तब पीसी रे लिखते हैं, आचार्य पीसी रे, कि उन लोगों को इतनी तमीज़ नहीं थी कि ये उसका वज़न कर लें कि ये बैलेंस में, कि एक मछली इधर रख लें और एक मछली मदर रख लें। तो मैंने कहा कि ये तो और भी मज़ेदार बात है, हमारा तो कबीरदास कह गया कि मरे में और ज़िंदा में फ़र्क एक सांस का है। हमारा आदमी तो सिर्फ ये जानता है कि तो सवाल ये है। बट मैं ये बता रहा हूँ कि उनकी जो, अब ये कब है, ये 17वीं शताब्दी की बात है। तो उस वक्त इनकी जो एक्सपेरिमेंटल, जिस
दुनिया में जिसका तहलका मचाया जा रहा है, उसकी जो उनकी जो मुख्य सबसे बड़ी संस्था थी अमेरिका में, उस ज़माने में ये विज्ञान की कोई चिंता ही नहीं थी, कुछ पता ही नहीं था। वो तो उतने ही बेवकूफ़ थे जितने आज आप ये कह सकते हैं कि भारतवासी बेवकूफ़ होंगे या तो लेकिन तो निहायत बेवकूफ़ लोग थे, कुछ जानते नहीं थे। लेकिन जब उन्होंने ये मैंने इसको देखा तो आगे चल कर के पीसी रे ये बताते हैं कि भाई जिस समय इनकी हालत ये थी, हमारी हालत क्या थी। ये तो 17वीं शताब्दी की बात है और हमारे यहाँ 13वीं शताब्दी की क्या बात थी। तो उन्होंने सब ग्रंथों का, जो पब्लिश ग्रंथ हैं, पुराने वैज्ञानिकों के हैं, भारतीयों के हैं, क्योंकि वो रसायन शास्त्र के एक व्यक्ति थे इसलिए उन्होंने रसायन के सारे ग्रंथों को लिखा। और उन्होंने बताया कि उस समय जो वैज्ञानिक था उसकी पुस्तक थी रसेंद्र सार संग्रह और रस रत्न अर्णव। और उसने कहा कि इस पुस्तकों में जो कुछ मैंने लिखा है वो वही है जो मैंने खुद प्रयोग करके लिखा है। किसी दूसरे ने लिखा था या नहीं लिखा था मुझे उसकी जानकारी है, तो भी मैंने उसको जब तक स्वयं अपने आप सिद्ध नहीं करके दिखाया, एक्सपेरिमेंटली प्रूफ करके नहीं दिखाया, तब तक मैंने इस पुस्तक में नहीं लिखा है। और फिर वो कहता है कि मेरी नज़र में वही रसायन शास्त्री हैं जो प्रयोग को खुद करके दिखा सकते हैं और अपने छात्रों से उस प्रयोग को करवा के दिखा सकते हैं। बाकी सब तो एक्टर्स ऑन स्टेज हैं। This is 13th century. Where is Royal Society? 17th century. Where is India? अब ये मैंने यहाँ से इसलिए लिया कि ताकि बहुत लंबा पीछे चला जाऊंगा तो आप कहेंगे कि मैं तो बहुत पुरानी बात, मैं पीछे चलना चाहता हूँ। अंडुलसी बहुत बड़ा स्पेनिश विद्वान था, 8वीं शताब्दी। वो कहता है कि अगर दुनिया में कोई देश है जिसमें विज्ञान है और जिसने सबसे अधिक विज्ञान की साधना की है तो दुनिया में उसका नाम है भारत। स्पेनिश विज्ञान में स्वयं वैज्ञानिक है, पुस्तक लिखी उसने, देशों को क्लासिफाई किया है 8th सेंचुरी। कहता है कि ये देश नंबर 1, ये देश नंबर 2, नंबर 3, भारत सबसे नंबर 1, चीन को नंबर 2 और फिर बाकी इधर उधर के देशों को उसने दिखाया। 5-6-7 देशों का पूरा वर्णन कि ये क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं। और भारत के लिए कहता है कि यहाँ का जो राजा है दैट इज़ द किंग ऑफ किंग्स बिकॉज ही नोज द साइंस। और पीछे जाना चाहूँ, आयुर्वेद को तो आप जानते ही, ईसा से कितने साल पुराना। आजकल तो बहुत बहस भी चलती है ना कि आयुर्वेद में ये और वो है, फलाना है, ढिमकाना है, और ये नया साइंस बहुत अच्छा है, जो कुछ है वो अच्छा है, मैं नहीं कहता कि नहीं है, पर जो आयुर्वेद को डिक्राई करके कहा जाता है कि इसको ये तो भूत प्रेतों की चीज़ है या जड़ी बूटियों की चीज़ है, उसकी बात मैं बता रहा हूँ। वो तो ईसा से 6 शताब्दी पूर्व है। क्या कहता है वो जितने आपके आज के सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो सब उसने गिनाए, और आज जितने भी हैं वो सब उन्हीं का विस्तार हैं, उनमें संशोधन है और उनसे आगे गए। लेकिन जो उसने दिखाए थे वो तो वैसे के वैसे ही, उसका उपयोग तो आज भी आप कर ही रहे हैं। उसके आगे हुई है प्रकृति, होगी, क्योंकि मनुष्य का दिमाग है, काम तो करेगा ही, आगे बढ़ेगा ही। इसका अर्थ ये नहीं है कि जो चरक ने और सुश्रुत ने लिख दिया दैट इज़ द एंड ऑफ इट, नो, बट दैट वाज द स्टेट ऑफ आवर आर्ट ऑफ मेडिसिन। पहला, अब आजकल बड़ी चर्चा हो रही है, इन्होंने भी चर्चा की हेल्थ केयर सिस्टम्स की।
अगर मैं आपसे कहूँ कि सबसे पुराना हेल्थ केयर सिस्टम इस देश में पटना में उल्लिखित है, जो विदेशियों ने आके देखा है और लिखा है। वो कहता है कि ये तो बड़ा अजीब देश है, यहाँ तो इलाज होता है, मरीज आता है, कोई उससे पूछता भी नहीं है, उसको देखता है और उसको अगर अंदर रखने की ज़रूरत है, इंटर्न करने की ज़रूरत है, तो उसको बिस्तरे पे ले जाता है, उसकी दवाई शुरू कर देता है, और जब वो ठीक हो जाता है तो ठीक होकर चला जाता है, कोई उससे पूछता भी नहीं है, पैसा भी दो, ये करो, कुछ नहीं। उसका खाना पीना हर चीज़ चलती है वहाँ। फिर कहता है हॉस्पिटल की दशा क्या थी, तो सारा विस्तार लिखा है कि हॉस्पिटल में क्या क्या होता था, कैसे होता था, खाना कैसे बनता था, खाना खिलाता कौन था, नर्सेज की, मेल एंड फीमेल नर्सेज की ड्रेस क्या थी, उनकी चिकित्सा की शिक्षा क्या थी, ये सारा विस्तार। मैं नहीं कह रहा हूँ, चाइनीज़ जो आए थे उस समय वो वर्णन करके लिखते हैं, हमारे ग्रंथों में तो है ही, लेकिन वो तो आपका विज्ञान, हेल्थ केयर सिस्टम्स, वेनसांग ये बोलता है। उसके बाद एक सज्जन आए, वो भी बोलते हैं। तो आप, अब हमारी वैज्ञानिकता की मैं बात बता रहा हूँ कि जब ये बातें आती हैं, अब सवाल उठता है कि ये शुरुआत कहाँ से हुई हमारे देश में। तो पहली शुरुआत तो इसकी हमारे देश में वेद से हुई है। वेद में भारतीय विज्ञान के सूत्र हैं। अगर पहला वैज्ञानिक प्रश्न करने वाला या फिलोसफिकल प्रश्न करने वाला कोई ग्रंथ है, कोई ऋषि है, कोई व्यक्ति है, तो वो वेद है। वो कहता है, सवाल करता है कि ये भाई पृथ्वी कहाँ से आई? कहता है जल में से आई। ये जल कहाँ से आया? साहब ये वायु में से आया। वायु कहाँ से आई? आकाश में से आया। आकाश कहाँ से? अग्नि में से आया। आकाश कहाँ से आया? स्पेस है, मैं नहीं जानता, शायद जिसने बनाया हो वो जानता हो। फिर कहता है पता नहीं वो भी जानता है या नहीं। ये इस देश का, जिसको हम धर्म ग्रंथ कहते, आई कैन चैलेंज, दुनिया के किसी ग्रंथ में 10,000 साल पुरानी भी अगर आज आप वेद के लेखकों की आयु मानते हैं, तो उस 10,000 साल पहले इतनी ज़बरदस्त वैज्ञानिक सोच, फिलोसफिकल सोच, क्वेश्चनिंग ऑफ द क्रिएटर, वो भी जानता है या नहीं जानता है। Does this STM or the NPL, NEP matches it? आप किस देश में NEP बना रहे हैं और किसकी अनुकृति से बना रहे हैं? ये जो स्टेम है, इसकी शुरुआत तो अमेरिका में 1945 में हुई, जब उन्होंने साइंस एंड टेक्नोलॉजी को डेवलपमेंट का, वार के विध्वंस के पश्चात डेवलपमेंट के लिए क्या किया जाए। स्पेशली यूरोप में तो बहुत बड़ा विध्वंस हो गया था, जैसा आजकल आप देख रहे हैं यूक्रेन में, इसी तरह का सारा विध्वंस हुआ था। तो व्हेनेवर बुश की कमेटी बनाई प्रेसिडेंट रूजवेल्ट ने, उस बुश की रिपोर्ट ने कहा कि अगर आपको डेवलपमेंट करना है, इनको सारे को वो करना है, तो आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी को उपयोग में लाइए, इसका उपयोग कीजिए। और तमाशा ये है कि उसका रिपोर्ट तो छपी अमेरिका में और उपयोग किया उसका रूस ने। रशिया वाज द फर्स्ट कंट्री टू यूटिलाइज साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर डेवलपमेंटल प्रोसेसेस, क्योंकि उसका, और फिर उसकी देखा देखी आसपास के तमाम लोगों ने उसका भी अनुसरण किया। अब ये किस लिए हुआ था? ये किसी मानव कल्याण के लिए नहीं, किसी फिलोसफिकल क्वेश्चन में से नहीं आया है। ये हम हर गए मर गए हैं, दुनिया में विभीषिका हो गई है, हम लड़ रहे थे, मर गए थे, नष्ट हो गए थे, खाने पीने की चीज़ें भी नहीं हैं, और इसलिए अब कुछ जल्दी जल्दी डेवलपमेंट करो। और फिर तमाम उसके साथ जितनी चीज़ें आई,
और फिर वो क्या डेवलपमेंट्स हुए वो एक लंबी कहानी है। लेकिन आप देखेंगे कि ये जो सारी कहानी है ये 300-400 साल की जो पश्चिम में ख़ास तौर पर ये जिसका उद्देश्य आपने जिक्र भी किया, रिडक्शनिस्ट सिस्टम और न्यूटोनियन सिस्टम का, उससे पुरानी खेल ही नहीं है ये। और वो भी ये है तमाशा, इन्होंने रिडक्शनिस्ट सिस्टम तो कह के छोड़ दिया, लेकिन होलिस्टिक सिस्टम को आपने बोलना चाहिए था। पर वो तो शायद केमिस्ट्री में कम है, फिजिक्स में ज़्यादा है, वो थोड़ा मैं बोल दूँ। पोजीशन ये है कि जब ये साइंस का उपयोग होने लगा ना, जब ये न्यूटन्स और बाकी के लोग आए, तो लोगों को लगा कि ये तो कुछ बहुत अच्छी बातें हो रही हैं। तो इससे पहले मैं आप एक और मज़ेदार बात बता दूं। जब मैं पढ़ने गया इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, तो पहले दिन हमने अपने प्रोफेसर से पूछा कि साहब आपने कोर्स तो लिखा दिया कि ये 5 पढ़ो, और बड़ा 4 लाइन का सारा कोर्स था, एमएससी फिज़िक्स का 4 लाइन में उन्होंने कोर्स लिखा दिया, ये पढ़ो। हमने कहा पढ़ तो लें किताबें, बोले किताब लाइब्रेरी में। वो लाइब्रेरी से जाके पूछो। हम वहाँ पहुँचे साहब। अब लाइब्रेरी में हमने देखा इत्तेफाक से सामने एक मोटा सा जर्नल पड़ा हुआ था। हमने देखा उस पर लिखा हुआ था फिलोसफिकल मैगजीन। यार ये हमारे फिज़िक्स वाले में ये फिल्मैग कहाँ से आ गई? तो हमने कुछ दिन बाद अपने प्रोफेसर से पूछा कि साहब वो फिल्मैग है, वहाँ उसमें फ़िज़िक्स का तो कहाँ होगा? कहने के वहाँ जो कुछ है वही वहीं से देखो। वो तो 10 बरस बाद मेरी समझ में आया कि एक ज़माना ऐसा था कि जब फिलॉसफी को सबसे बड़ा विज्ञान माना जाता था, तो हर साइंटिस्ट अपने को फिलोसफर कहता था, तो इसलिए फिलॉसफी हो गई। अब उल्टा है, अब हर फिलोसफर अपने को साइंटिस्ट कहता है, हर हिस्टोरियन अपने को साइंटिस्ट कहता है, और ये मैकेनिकल साइंटिस्ट भी कहते हैं, और साथ ही साथ ये इकोनॉमिस्ट भी अपने को साइंटिस्ट। तो देखिए ये जो इस बात को, इस सारे खेल तमाशे को पहले समझना चाहिए। असली बात यह है कि उसके बाद अब ये पिछली शताब्दी में दूसरी लड़ाई के बाद, पहली लड़ाई के बाद ख़ास तौर पर, और दूसरी लड़ाई के बाद और ज़्यादा, ये वह सवाल कि ये दुनिया तो गड़बड़ हो रही है, इसमें तो कैसे चलाया जाए, इसको क्या किया जाए। तो इसमें से कुछ संस्थाएं निकली। पहली निकली थी लीग ऑफ नेशंस, वो फेल हो गई। उसके बाद निकली फिर आपकी यूएनओ, वो भी कैसी चल रही है आप जानते हैं। इसमें से ये भी कहा गया कि नहीं साहब, ये खाली साइंस से ही काम नहीं चलेगा, जब तक साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इकोनॉमिक्स ये मिलेंगे नहीं तब तक काम पूरे नहीं होंगे। तो ब्रिटेन इंस्टीट्यूट्स आ गई, वर्ल्ड बैंक आ गया, IMF आ गया, यूनेस्को आ गई, तमाम दुनिया भर की चीज़ें वो आ गई इसमें। पर आई किस लिए? दे आर नॉट सेइंग कि मैं जानता हूँ कि नहीं जानता हूँ, या वो क्रिएटर जानता है कि नहीं जानता है, ये सवाल नहीं है। वो आई तो इसलिए कि अब दुनिया को हम कैसे चलाएं, कब्जा कैसे करें। And the present state of affairs is कि everything is dominated by state, that is politics, banks, that is economy, and third, the scientists or the technologists. So we are heading towards a new system of development. जो चला था कहीं से, चला तो था इसलिए कि दुनिया में बड़ा गड़बड़ हो गई है, लड़ाई हो गई है, विभीषिका आ गई है, कैसे इसको ठीक करें, कैसे लोगों को खाना पहुंचाएं, क्या उद्देश्य रखा गया था। अब क्या, अब कितनी भी ये बात हम करें, नो टेक्नोलॉजी कैन बी परस्यूड बाय ए पुअर कंट्री। आप कितना ही जोर लगा लें आज, आप यू आर फॉर, हम जो स्टेम जिसकी बात कर रहे हैं कि हम इससे चलेंगे, लोगों को साइंस भी देंगे,
कहाँ से आएगी, कौन से आएगी? आप अगर देश में ला रहे हैं तो क्या ला रहे हैं? हमने हमारे उसमें NEP में भी ये विषय है ना कि हम विश्व गुरु बनेंगे। तो कैसे बनेंगे? बनना चाहिए, हम में पोटेंशियल है, हम थे बिकॉज वंस वी वेयर, पर बनेंगे कैसे? जब हम थे तब क्यों थे? तब हमने वेद दिया था, उपनिषद दिए थे, गीता दी थी, बुद्ध को दिया था, जैन को दिया था, गुरु नानक को दिया था। ये भी 600 साल पुरानी बात। ये दे रहे थे ना हम, इतने विश्वविद्यालय दिए थे हमने। तब तो सिर्फ यूरोप में 2 विश्वविद्यालय हुआ करते थे। अगर एक विश्वविद्यालय में जा रहे हैं तो आप जोड़ और घटाना सीखेंगे, दूसरे में जा रहे हैं तो गुणा और भाग सीखेंगे। एक विश्वविद्यालय भी आपको 2 चीज़ें नहीं पढ़ा सकता था, उसके लिए भी 2 विश्वविद्यालयों में जाना पड़ता था। और हम नालंदा और तक्षशिला की बात कर रहे हैं कि हम उन्हें इनका यहाँ पर दोबारा आविष्कार करना चाहते हैं। ज़रूर कीजिए, मगर क्या था? क्या था? वो कोई भी विश्वविद्यालय किसी कैपिटलिस्ट के लिए या किसी पूंजीपति के लिए या किसी अर्थव्यवस्था के हाथ से नहीं चलते थे। जब जीवक तक्षशिला में क्वालिफाई होके चला तो जो उस समय की परिपाटी थी उसने कहा कि मुझे गुरु दक्षिणा क्या देनी है बताइए, मुझे कैसे, जो आपने मुझे सिखाया है उससे मैं ओरिजिन कैसे होऊंगा? तो उनसे कहा गया कि हाँ, आपको काम दिया जाता है, आपको गुरु दक्षिणा ये है कि इस तक्षशिला के इस एरिया में, एक पर्टिकुलर एरिया उनको दिया गया, उसमें जितनी भी जड़ी बूटियाँ हैं, जो भी जितने भी इसके अंदर जिसको कहिए पादप हैं, उन सब में से जो भी मनुष्यों के लिए हानिकारक हो वो ढूंढ करके लाओ, उसको क्लासिफाई करो। और 10 बरस काम करने के बाद उसने कहा कि आई कैटेगराइज्ड ऑल ऑफ देम एंड नन ऑफ देम इज डेंजरस फॉर ह्यूमन बीइंग। एवरेज जो थी उसको मैंने बदल दिया है, उसको मैंने परिवर्तित कर दिया है फॉर फ्रॉम विष टू औषधि। अगर कोई ऐसी थी भी जो जहरीली थी तो उसको कैसे, उसका उपयोग करके उसका विष वाला हिस्सा हटा करके उसका कैसे उपयोग किया जा सकता है, दैट आई हैव डन इट। दैट इज तक्षशिला एंड नालंदा। वेयर इज इट? इन दिस इज इन NEP। तो आप करना क्या चाहते हैं? देश को ले जाना कहाँ चाहते हैं? टेक्नोलॉजी, यस, मेरा हाथ है टेक्नोलॉजी का। सबसे बड़ा जो नेचर ने हमें दिया है ना, शरीर, इसमें सारे विज्ञान के जितने भी सिद्धांत हैं सब लगते। इसमें इलेक्ट्रिसिटी भी है, मैग्नेटिज्म भी है, इसमें कैपिलरी भी है, और इसमें प्रोटीन भी है, और इसमें थर्मोडायनेमिक्स भी है। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो, ये मेरा हाथ है ना, ये मूवमेंट्स एक कोई रोबो करके दिखा दे, इतने नंबर मूवमेंट्स, द हाईएस्ट आई चैलेंज इट। एक कोई ऐसा चश्मा बना दीजिए या टेलीस्कोप बना दीजिए जो दूर की चीज को और नजदीक की चीज को एक साथ फोकस कर सके। बता दीजिए, कैन डू इट। हर चीज एंटी ग्रेविटी भी है इसमें। आखिर यहां से तो आप क्या ऐसी चीज कहते हैं कि जिसके लिए आपको दुनिया में जाने की जरूरत है? तो सब आपके पास मौजूद है। जो पश्चिम की गलती कर रहा है, जिसका फल हम भुगत रहे हैं, व्हाट इज दिस यूक्रेन वॉर? ये सिर्फ वही उसी टेक्नोलॉजी, उससे पैदा हुई जो ग्रीड है, जो उससे नफरत है, जो उससे पैदा हुई ईर्ष्याएं हैं, जो उससे पैदा टू ग्रैब मोर एंड मोर, ये उसका नतीजा है। क्यों हमारा एक कैपिटलिस्ट दूसरे कैपिटलिस्ट को मार के और उससे ऊपर बढ़ने की जरूरत करता है? बताइए क्यों? क्यों? ये लाखों लाखों करोड़ लेके भागने वाले लोग जो हैं वो भी तो उसी बैंकिंग सिस्टम में से ही पैदा हुए हैं ना। तो क्यों पैदा हो गए साहब?
सोचने की बात यह है कि शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए, किस लिए होनी चाहिए, और इसका अर्थ है कि मानव सभ्यता का क्या उद्देश्य होना चाहिए। दुनिया की इस महान समुदाय को जो विश्व में, मैं समझता हूँ अभी तक तो इस ग्रह के अलावा कोई दूसरा ग्रह नहीं है जिसमें हमको जीवन मिला है। मिल सकता है पर आज भी तो नहीं मिला है। तो इसको क्यों नष्ट करना चाहते हैं भाई? हम क्यों नष्ट करना चाहते हैं? ये हम जीडीपी को लेके क्यों चक्कर में पड़े हुए हैं कि जीडीपी बढ़ाओ? माने क्या बढ़ाओ? लंबी कहानी हो जाएगी, मेरा बहुत पुराना विषय है। लेकिन जीडीपी का मतलब यह है कि आप कहते हैं कि गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड, उनका मार्केट वैल्यू, मनी वैल्यू, जो भी कुछ है। ये गुड्स एंड सर्विसेज में, सर्विसेज तो साहब मैं आपको उठा के एक गिलास पानी का दे दूं तो सर्विस हो गई आपकी, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। बट व्हाट अबाउट गुड? हैं? उसका पैसा लेंगे तब सर्विस है। आजकल यहाँ तो सर्विस जो है वो अगर आप पैसा ना भी लें तो मेरे उसमें चली जाएगी ना। आजकल इसकी ज़रूरत नहीं है कि ये जहाँ मैंने इनको दिया और इन्होंने इसको रिसीव किया मेरे खाते में चली गई, तो उसकी ज़रूरत नहीं है। तो प्रॉब्लम ये है। तो ये गुड्स, तो ये कैसे पैदा होती हैं? गुड्स पैदा होती हैं आसमान से तो नहीं टपकती। आप क्या करते हो? आप प्रकृति से कुछ निकालते हो, लोहा निकालते हो, एल्यूमिनियम निकालते हो। वो आप ही बता रहे थे जैसे कि इतना बड़ा ये सारे जो मेंडलीव ने निकाल दिए, बता दिए कि और अभी हो सकते हैं, उन सबको निकालते जाओ। यही मतलब है ना उसका उपयोग करते जाओ। तो जब आप गुड्स को सामने लाते हैं तो आप क्या कर रहे हैं? आप नेचर को कन्वर्ट कर रहे हैं। यू आर रिड्यूसिंग नेचर। आप सीमेंट से क्या कर रहे हैं? आप अपना मकान तो बना रहे हैं, लेकिन सीमेंट का जो भंडार है, जो उसकी खदान है, उसको तो नष्ट कर रहे हैं। तो एनीथिंग विच यू आर सेइंग टुडे इज मैन्युफैक्चर्ड in terms of producing the goods is in fact reducing or deteriorating the nature. आप पानी खराब कर रहे हैं, आप हवा खराब कर रहे हैं, तो आप reducing the nature. Nature is not created by you. Nature is not meant for me alone. I have no right to deny the coming generation to get free air. उसको उसकी को स्वच्छ हवा न मिले इसके लिए मैं इस हवा को दूषित करूं? ये अधिकार मुझे किसने दिया है? ये अधिकार मुझको दिया है इस टेक्नोलॉजिकल, साइंटिफिक, कैपिटलिस्टिक सिस्टम की गठजोड़ ने। मुझे लेना है, मुझे खाना है, आपको मिले नहीं मिले, who are you? I have the capacity, I have the money, I have the technology, I do it. आप कौन होते हैं? मनुष्य होते वहाँ करते हैं मनुष्य। हो गए होंगे आप मनुष्य। मैंने कोई जिम्मा नहीं दिया आपका कि आपको कपड़े मिले, आप जिंदा रहना चाहते हैं, रहिए। मेरे हाथ में तो है ना। इट इज़ दिस फेलेसी जिसको हम आज के ज़माने में ये समझ रहे हैं कि हम ग्रोथ कर रहे हैं। देयर इज़ ए वेरी पावरफुल मूवमेंट नाउ इन सेवरल यूरोपियन कंट्रीज विच से नॉट ग्रोथ बट डी ग्रोथ। आपने जो कुछ अभी तक किया है वो उल्टा किया है। एंड मिस्टर टाउनी, अनदर इकोनॉमिस्ट, उसने कहा कि भाई पिछले 50-52 सालों में इंग्लैंड में जो कुछ हमने इकट्ठा किया है वो गार्बेज इकट्ठा किया और कुछ नहीं। वी हैव कन्वर्टेड नेचर इनटू गार्बेज और 10 गाड़ियां खड़ी कर ली अपने। और क्या, द ओनली कंट्री विच अगेन इज ए पार्ट ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन एंड इंडियन पार्ट इज भूटान, जिसने कहा कि नो सर, वी डोंट वांट दिस जीडीपी, वी वांट दी व्हाट? हैप्पीनेस, इंडेक्स ऑफ हैप्पीनेस। सो द एम ऑफ civilization should be make
humanity is happy humanity. Therefore, the aim of education, NEP, should be to create a happy civilization, civilized group of people. Can we do it? Are we doing it? Or any country is doing it? Except these दो एक छोटे हैं. No, sir. इसलिए द बेसिक प्रॉब्लम इज कि हम मानव सब समाज को कहाँ ले जाना चाहते हैं. क्या ये गहराई से सोचने की ज़रूरत है. इसका ये मतलब नहीं कि टेक्नोलॉजी की ज़रूरत नहीं. टेक्नोलॉजी की ज़रूरत तो रहेगी, पैसे की ज़रूरत भी रहेगी, लेकिन इसके साथ साथ इंसानियत की ज़रूरत भी रहनी चाहिए कि नहीं. Can you consider a human being without humanity? Can you? तब बात आती है फिर उसमें वही कि क्या हमारे ऋषि ठीक थे या आजकल के ऋषि ठीक है. और इसमें भी जो मेरे विज्ञान के ऋषि हैं, उन सब ने तो कह दिया कि भाई जो हिंदुस्तान कह रहा था वही सही है. The father of modern quantum mechanics, जो दो लोग जिनकी सबसे बड़ी दुनिया में प्रतिष्ठा है, उनमें से एक थे वो अपना हेजनबर्ग और दूसरा था ये अर्नेस्ट क्या है वो, हाँ, वो कहता है कि दुनिया तो माया है. जो ये हिंदुस्तानी कहता है, द हिंदुस्तानी ब्राह्मण व्हेन ही सेज कि तत्वमसी इज करेक्ट, जो तू कह रहा है तत्वमसी, दैट इज करेक्ट. एंड जो मैं कह रहा हूँ, इवन एट द कॉस्ट ऑफ बीइंग ए क्रिश्चियन, एट द कॉस्ट ऑफ ब्लेस्फेमी, द इरविंग श्रोडिंगर सेज, आई से तत्वमसी इज द करेक्ट आंसर. विच द हिंदू ब्राह्मण सेज तत्वमसी, दैट दाउ आर्ट. और मैं जो फिजिक्स कर रहा हूँ वो यही सोचने समझने के लिए कर रहा हूँ कि भाई इधर से देखो तो गौरी शंकर है, उधर से देखो तो माउंट एवरेस्ट है, बात एक ही है. हेजनबर्ग कह रहा है कि अगर आपको कुछ समझना है तो बिना समझने में और आप में अगर भेद है तो आप नहीं समझ सकते. An observer and observed must be coalesced. जब तक वो एकाकार नहीं होते समझ नहीं सकते. Otherwise it will be uncertainty, the principle of uncertainty. हम तो हजारों साल पहले कह चुके हैं, शिवो भूत्वा शिवम यत्. शिव होना है तो शिव बन जाओ. अब आपने तो रास्ते बदल लिए. अब ये जो देश का रास्ता था उसको अगर आप लाना चाहें तो लाएं, नहीं लाना चाहें तो जिधर जा रहे हैं उधर जाएं. फिर ये शिकायत मत कीजिए कि हवा ख़राब है, पानी ख़राब है. अब मेरे यहाँ मोहल्ले में आए थे लोग आज के साथ पानी नहीं मिल रहा, पानी ख़राब आ रहा है. अब यहाँ दिल्ली में, भारत की राजधानी में, और वो भी नई दिल्ली में पानी नहीं आ रहा, और जो आ रहा है वो ख़राब आ रहा है. तो रहो भाई, किसने कहा था? फिर आप क्यों हल्ला कर रहे हैं कि दुनिया में प्रदूषण हो गया है, और हमको समझाया जाता है कि आप अपना प्रदूषण कम करो, और हम तो रोज़ बंदूक चलाएंगे, रोज़ उस पर एक दूसरे के ऊपर गोलीबारी करेंगे, ज़रूरत पड़ेगी तो परमाणु बम भी छोड़ देंगे. ये हम कह रहे हैं ना रोज़. क्यों कह रहे हैं भाई, क्यों? रोज़ कहा जाता है कि प्रदूषण हो गया है, क्लाइमेट है. क्यों हो गई है क्लाइमेट ख़राब? जब दुनिया बनी थी तब तो ऐसी नहीं थी. हम जब छोटे थे तब भी ऐसी नहीं थी. आज से 10 साल पहले भी ऐसी नहीं थी. अब क्या होती जा रही है? क्यों हो रही है? रोज़ कहते हैं साहब बहुत ख़राब है, गर्मी है, अब मुसीबत है साहब, बिजली नहीं आ रही है. तो नहीं आ रही तो क्यों नहीं आ रही भाई? क्यों? कहाँ चली गई वो? पानी कहाँ चला गया? कोई इंडस्ट्रियलिस्ट ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि वो पानी का दुरुपयोग कर रहा है. हमको ये तो समझाते हैं कि इसको हम रिसाइकिल कर देंगे, इसको दोबारा तुम पी लेना. यही तो हो रहा है ना.
तो ये आपको तय करना है कि विच वे टू गो. इसलिए ये सोचने की बात है कि ऑल पॉलिसीज वो चाहे एजुकेशन की हो, वो चाहे इकोनॉमी की हो, चाहे ट्रांसपोर्ट की हो, चाहे फॉरेन पॉलिसी हो, जो भी हो, उसका मकसद क्या है? क्या वो ह्यूमैनिटी के लिए है या वो सिर्फ कुछ लोगों के लिए है, कुछ देशों के लिए है, कुछ समय के लिए है? इट चेंजेस एवरी टाइम. आज दो दोस्त हैं, कल को दो दुश्मन हो गए. क्या बात है भाई? ये हमको पता ही नहीं चलता है कि हम किसके दुश्मन हो गए. ये तो एक दिन पता लगता है कि अब आज से हमारा चीन दुश्मन हो गया, और अगले दिन पता लगता है कि वो जो रूस हमारा दोस्त था वो हमारा दुश्मन हो गया, और वो जो अमेरिका जिससे हमारे खट्टा चल रहा था उससे मीठा हो गया. Why? तो बेसिक बात सोचने की है, और इसलिए वो बात हमारे देश भारत में कही गई थी कि अहम ब्रह्मास्मि सर्वमिदं खलु ब्रह्मम अहम आत्मा तत्वमसि. द मैटर इज ओवर. तो इसलिए मैं इधर से चला था और इधर पहुंच गया. धन्यवाद बहुत बहुत. धन्यवाद डॉक्टर जोशी जी. It indeed has been our pleasure to have Dr. Joshi with us, Jayant Sahasrabudhe ji with us, Dr. Desiraju ji with us, and Bhavesh Kansara. We would have liked to go on, but everything good comes to an end. And with that, we thank each one of you who have been in the audience so patiently and came on a working day. We tried our best to keep it on Saturday, we couldn't. With that, I thank you all and hope to meet you soon in more such conversations and discussions. Narayan.